नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश। इकोनॉमिक सर्वे पेश होने वाला है और उस पे बिस्तक की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं अब से लेकर बजट तक। इनफैक्ट बजट डे वाले दिन तो हमारी एक मेगा कवरेज होगी ही, लेकिन ये इकोनॉमिक सर्वे जो कि एक तरीके की रिपोर्ट कार्ड है कि सरकार ने बीते साल किस तरीके की परफॉर्मेंस दी, उस पे जो जो अपडेट्स आते जाएंगे, जैसे ही सर्वे ये पेश होगा पार्लियामेंट में, तो उसके बाद जो जो अपडेट आते जाएंगे उसको आपको बहुत ही आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के मेहमान का हम स्वागत कर लेते हैं। संदीप वेम्पति जी हमारे को इस समय ज्वाइन कर रहे हैं, शास्त्री हैं। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार सर, जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है और ये तो एक तरीके की रिपोर्ट कार्ड है कि सरकार ने बीते साल में क्या पेश किया, कैसा प्रदर्शन किया। आप बताएं, आपका तो बीजेपी से अब नाता भी है, लेकिन ये जो हम अभी का एक स्लो डाउन देख रहे हैं अर्थव्यवस्था में, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ये तो अचानक से हमारे सामने एकदम से मुश्किल का दौर आ गया। सरकार पिछले साल इलेक्शन ईयर के चलते हो सकता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ना दिखा पाई हो। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस बजट में वित्त मंत्री को एड्रेस करना, ग्रोथ को बढ़ावा देना? ठीक है, नमस्कार। आई एम हैप्पी दैट यू इनवाइटेड मी फॉर द शो एंड आल्सो टू स्पीक ऑन द इकोनॉमिक सर्वे दैट इज टू बी प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट। लेकिन आप जो कहा कि अभी तो इकोनॉमी में कोई स्लो डाउन नहीं है, जो भी आप नहीं है देयर इज नो स्ट्रक्चरल स्लो डाउन, देयर इज नो साइक्लिकल स्लो डाउन। तो हम जनरली इकोनॉमी में हम दो तरीके के शब्द यूज़ करते हैं, एक स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल मतलब व्हेन देयर आर सम वीकनेसेस, जब इंडिया इकोनॉमी में वीकनेस अगर जब होता है तो हम स्ट्रक्चरल कहते हैं। साइक्लिकल मतलब बिजनेस के रिलेटेड संबंधित में विषय साइक्लिकल स्लो डाउन। बट मेरी तरफ से द वे आई सी इंडियन इकोनॉमी, देयर इज नो स्लो डाउन इन इंडियन इकोनॉमी। यस, 8.2 ग्रोथ रेट हमको FY24 में हमको मिला। इस बार हमको 6.4, अभी लेटेस्ट एस्टिमेट 6.4 है। 8.2% से हो तो गए 6.4%। 6.4 या 6। एक इनका कुछ कारण है। फर्स्ट थिंग क्या है ना, हम कोविड के बाद हम रिबाउंड किया, तो कोविड का जो भी डिमांड थे उसका डिमांड हमने अगला 3 साल तक देखने का हमको मौका मिला। अभी एक्चुअली स्टार्टिंग ऑफ दिस फिस्कल ईयर में हमको 7.2 ग्रोथ रेट एस्टिमेट हमको RBI से मिला, लेकिन 7.2 हमको मिलने के अभी भी मौका है, चांसेस है, लेकिन कुछ कारण से अभी ये 6.4 के आया था। ठीक है, 7. क्यों इसलिए फोरकास्ट किया कि दैट गवर्नमेंट विल स्पेंड 11.11 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन दिस फिस्कल ईयर। लेकिन हम इस साल में इलेक्शंस भी देख लिया, तो इलेक्शन की वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस पेस में होनी चाहिए उस पेस में नहीं हुआ। लेकिन इसका कारण ये नहीं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, फंड्स हमारे पास हैं, लेकिन खर्च करने के लिए हमारे पास कुछ लिमिटेशन हुआ। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस करंट फाइनेंशियल ईयर हमको 3 महीने वी ओनली स्पेंट ओनली इन इलेक्शंस, अप्रैल मई जून। चुनावी दौर जो था उसमें तो सरकार उतना खर्च नहीं कर पाई जितना कि एस्टिमेट लेकर चल रही थी। एग्जैक्टली। तो इन आप फर्स्ट क्वार्टर के अगर डेटा देखोगे तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% लोअर देन द लास्ट ईयर। सेकंड क्वार्टर में वो गैप ने हम फिलअप किया और अभी वो इट इज ओनली बीन लेसर बाय 18%। पहले क्वार्टर में 35% कम खर्चा किया, दूसरे क्वार्टर में 18% कम खर्चा किया। इसका मतलब क्या है, हमारा पेस बढ़ गया क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 तक, राइट। उसके बाद नवंबर, द लेटेस्ट डेटा दैट वी हैव इज अंटिल नवंबर में द डेटा इज ओनली 12% लोअर देन द लास्ट ईयर। हम क्यों कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात? क्योंकि बहुत कैस्केडिंग इफेक्ट होता है इकोनॉमी में। सरकार को कैपेक्स पे खर्च करना ही है, क्या सरकार की प्राथमिकता है। क्या इकोनॉमी 101 अगर आप समझोगे 101 समझोगे, देन simple thing, when you spend money we want to extract maximum output, maximum value out of the expenditure. The best way to incur an expenditure is not always revenue, is always capital expenditure, right? उसके क्या multiple effect आपको मिलता है? When you spend $1 or 1 rupee, you can get around 3 to 4 rupees of impact. 1 रुपया खर्च करे अगर सरकार इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम बोल रहे हैं कि वो करे, ब्रिजेस बनाए, रोड बनाए, सड़कें बनाए, तो वो 4 रुपए लौटाती है इकोनॉमी। एग्जैक्टली। बट लेकिन इसका द बेनिफिट इज नॉट इमीडिएट, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो इसीलिए हम क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए हम कोशिश करना चाहिए, राइट। दैट इज द वेरी रीजन इफ यू सी हम if you see the progress in each quarter, the capital expenditure is increasing its pace, right? इसका मतलब क्या है, हमारा पूरी फोकस है
जितना हम एलोकेट किया इस साल में 11.11 लाख करोड़, उसको पूरा खर्च करने के लिए सरकार तो पूरा ताकत लगा रही है, पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा उसका जो भी बेनिफिट मिलना है उनको मिलना चाहिए। ये आंकड़ों पे हम आएंगे सर, उससे पहले एक अपडेट आ गया मेरे पास, और ये अब की सबसे बड़ी खबर है कि वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे जो है वो पेश कर दिया है संसद में, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। और उससे पहले हमने देखा राष्ट्रपति का संबोधन भी होता हुआ, और उन्होंने भी बहुत सारी उपलब्धियां जो है सरकार की उन्होंने अपनी इस स्पीच में ये हमने सुना। ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी ने भी सुबह यही बोला था कि ये जो बजट सेशन शुरू हो गया, अब तो किक स्टार्ट हो गया, 1 फरवरी से बजट सेशन हो जाएगा, और उसमें फिर उन्होंने यही बोला कि बजट देश को नई ऊर्जा की उम्मीद देगा। बजट सत्र के दौरान महत्वपूर्ण सुधारों की उम्मीद जताई जाएगी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है उन्होंने। महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण फैसले इसी सत्र में लिए जाएंगे। उनका कहना है बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स जो हैं वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होंगे। भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ये तो सर सवाल सबके मन में है। हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, पॉपुलेशन हमारी इतनी तेज गति से बढ़ गई, हमारा पर कैपिटा जीडीपी लगभग 2300-2350 करोड़ रुपए, 2300-2350 डॉलर के आसपास है। अमेरिका का 74,000-75,000 डॉलर के आसपास है। तो ये जो इतना बड़ा गैप है दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और भारत के बीच में, पर कैपिटल जीडीपी हम बोलते हैं, ये तो बोलते हैं कि हमारी जीडीपी जो 5वें पायदान पे आ गई है, लेकिन पर कैपिटल जीडीपी मतलब कि पर प्रति व्यक्ति कितनी कमाई होती है जी, ये गैप कैसे कम होगा? ठीक, इसलिए हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब क्या है कि जो गरीब लोग हैं उसको गरीब नहीं रहना चाहिए, पहले उनको गरीबी से बाहर निकालना है, और उनको जो भी इनकम अर्निंग के लिए जो भी मौका मिलना चाहिए, सरकार पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं उनको मौका देने के लिए। एक्सेस टू क्रेडिट, स्किल के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए। तो इसका मतलब क्या है, 1947 से 2014 तक जो मॉडल्स हमने अडॉप्ट किया, दे वर नॉट, क्या बोलते हैं, फ्यूलिंग आवर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स। We have adopted in the Nehru era, we adopted socialism, right? They were not kind of giving everyone an aspiration and also an opportunity to grow. सबको एक साथ लेकर नहीं चल रहे जी। Now we अगर 4 से 14 आप देखोगे, we have lost the entire decade and we have been mired in corruptions, misgovernance, and one family was taking the decisions and not in the interest of the country. बट ओनली 14 के बाद ही हमको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो गरीब के बारे में सोचा, जो महिला के बारे में सोचा, जो किसान के बारे में सोचा, जो युवा के बारे में सोचा। और प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि अगर विकसित भारत और विकसित राष्ट्र अगर बनाना है, हम गरीब को एम्पावर करना है, यूथ को एम्पावर करना है, अन्नदाता को एम्पावर करना है और नारी शक्ति को एम्पावर करना है। तो इन चारों के एम्पावर करने से हम विकसित भारत को सिद्ध कर सकते हैं। ये पिछली बार की बजट स्पीच में रिफ्लेक्ट भी हुआ था। स्किल इंडिया के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फोकस था। यूथ रोजगार के मौके यहाँ पर बढ़ाने पर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स हमने पेश किया लास्ट बजट में। वो जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव था वो किक स्टार्ट हो पाया क्या सही तरीके? देखो, हम कंसल्टेशंस किया, मतलब भारत सरकार ने किया, लेकिन देखो हमको पूरा साल नहीं मिला इसको पेश करने के लिए, इसको लागू करने के लिए। तो हमने बजट पेश किया जुलाई में, एक्चुअली होना चाहिए फरवरी में, 23-24 साल में फरवरी। तो हमको वी डिड नॉट इंट्रोड्यूस ए फुल ईयर बजट इन फरवरी 2024। तो हम जुलाई 2024 में ही इस पूरा साल का बजट हमने पेश किया। तो हम पूरा मौका नहीं मिला, पूरा साल का समय नहीं मिला, इसलिए थोड़ा गैप हमको मिला। और उसके लिए हमारा जो भी हमने पेश किया, जो भी अनाउंस किया हम बजट में, उसको लागू करने के लिए हमको उतना समय नहीं मिला, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। लेकिन गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इम्प्लीमेंट दैट स्कीम इन इट्स एंटायरिटी विथ लॉट्स ऑफ कमिटमेंट। तो दैट इज वन स्कीम दैट विल श्योरली गिव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, फर्स्टली इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। आपको लगता है कि वो इस बजट में दोबारा वो बात दोहराई जाएगी जो पिछली बार थी, इंसेंटिव? It is already announced in the last budget. So probably if there is a government thinks that probably more can be added, it can add, but I don't think it will be immediate because we have not seen वो कैसे evolve हो रहा है। तो उसके पहले हम
उस पर एडिशंस बात करना वो ठीक नहीं लगता है. तो आई थिंक द गवर्नमेंट विल बी मोर कमिटेड टू रोल आउट दैट प्रोग्राम, सी दी हाउ इट इज़ पैनिंग आउट. उसके बाद अगर फीडबैक अगर अच्छा है तो आगे करेंगे. अगर कुछ फीडबैक नेगेटिव है तो उसको जो भी एडिशन करना है, जो भी अमेंडमेंट्स करना है वो करेंगे सरकार. सो सरकार तो इज ऑलवेज ईयर्स द फीडबैक, पब्लिक फीडबैक. सो आई थिंक द गवर्नमेंट विल श्योरली टेक द फीडबैक एंड ज़रूर जिस प्रकार से करना है वो ज़रूर करेंगे. पर जैसे हम कंपनियों के नतीजों को एनालाइज करते हैं तो उसमें 2 क्वार्टर से तो कंपनियों में अर्निंग्स में तो स्लो डाउन दिखाई दे रहा है. जी. आप बोल रहे हैं जीडीपी में नहीं उतनी अभी वैसे मौका नहीं मिला, मतलब उतना तेजी से. मैं दूसरे पॉइंट पर जाएगा तो उसमें जो कंपनी के जो नतीजे जो आते हैं उसमें जब मैनेजमेंट बोलती है तो यही बात निकल के आती है कि इतनी तेज गति से जो एडिशंस हैं एम्प्लॉय काउंट वो नहीं बढ़ा रही. टीसीएस जैसी कंपनी भी नहीं बढ़ा रही है एम्प्लॉय काउंट इतनी तेज गति से अभी. तो सर ये रोजगार के मौके बढ़ाना क्या सरकार की अभी प्राथमिकता रहेगी इस बजट में? देखो, आप ईपीएफओ पेरोल्स आप डेटा देखोगे, पिछले लास्ट 5-6 years we have increased the count from almost 60-70 lakhs per year to almost like 1.4-1.5 crore in the formal sector I'm speaking about. उसमें टीसीएस भी आएगा, उसमें विप्रो भी आएगा, उसमें सारा फॉर्मल सेक्टर हायरिंग उसको इंक्लूड हो जाएगा. तो आप जो बता रहे कि हायरिंग उतना नहीं हो रहा है, देन ईपीएफओ में आपको डेटा तो बढ़ रहा है. तो प्रॉब्ली ईयर एंड देयर छोटा मोटा कंपनीज में हायरिंग उतना तेजी से नहीं हो रहा होगा, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी तो हायरिंग तो बढ़ रहा है. टीसीएस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी. मे बी दे सैचुरेटेड. आई मीन कंपनी स्पेसिफिक मैं बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ईपीएफओ जो रिकॉर्ड करता है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में, आंकड़ा तो दिख रहा है कि वो बढ़ रहा है साल से साल. तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. आई एम ओनली स्पीकिंग आउट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट. इनकम अर्निंग ऑपरेशन अलग बात है, लेबर अलग है और एम्प्लॉयमेंट अलग है. तो एम्प्लॉयमेंट ईपीएफओ कैप्चर करते हैं. ईपीएफओ पेरोल के अनुसार द ग्रोथ रेट इज देयर. अच्छा, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. मूडीज एनालिटिक्स ने भी एकदम से बात की थी कि जो आरबीआई का जो प्रोजेक्टेड टारगेट था जीडीपी का शायद उतना ना हो पाए, और वीक रुपी, एफआई का आउटफ्लो, वोलेटाइल इन्फ्लेशन, ये सब सिनेरियोज वो एक साथ बोल रहे हैं कि आ गए हैं इस समय अर्थव्यवस्था के लिए, जो कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर असर डाल सकते हैं. इसी मुद्दे को आगे उठाएंगे. एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं यहाँ पे. पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं जॉब क्यों छोड़ा. आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ. बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया. यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज. एलआईसी एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो. हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. कल मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट आएगा. उससे पहले आर्थिक सर्वे की बात कर रहे हैं. आर्थिक सर्वे जो है वो पेश हो चुका है संसद में. उसके अभी फाइन प्रिंट्स आ जाएंगे. उसके ऊपर बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे. अभी हमारे साथ संदीप वेम्पति जी जुड़े हुए हैं और हम बात कर रहे हैं कि जीडीपी में जिस तरीके का इस समय मूड माहौल, अर्थव्यवस्था में धीमापन, जो कि वेम्पति जी बोल रहे हैं कि उतना नहीं दिख सकता क्योंकि सरकार को मौका नहीं मिला. अभी पिछले साल इलेक्शन ईयर था तो उतनी तेज गति से वो एक्सपेंडिचर नहीं कर पाई. लेकिन मूडीज एनालिटिक्स बोलता है कि कमजोर हो गया रुपया आपका. एफआईज जो है आउटफ्लोज देखने को मिल रहे हैं. ऊपर से वोलेटाइल इन्फ्लेशन का सिनेरियो है. आरबीआई बोल रहा है कि पहले जीडीपी 7.2% का एक्सपेक्टेशन था, वो 6.6% पे रहेगी. और आरबीआई बोल रहा है महंगाई जो है 4.5% से बढ़कर 4.8% रहेगी. इसलिए किसी भी पैरामीटर पे जो भी इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छी पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं. ठीक है, हमको ये इन्फ्लेशन हमको देखने को मिला कोविड के बाद. उनका बहुत कारण है. एक, हमको डिस्ट्रप्शंस मिला क्योंकि सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो गया कोविड लॉकडाउन की वजह से. उसके बाद यूक्रेन का वार आ गया, उसके वजह से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गया. तो इसके वजह से पूरा इंडिया नहीं है, पूरा देश, पूरा दुनिया में आपको इन्फ्लेशन दिखने को शूट अप हो गया. राइट. लेकिन आप देखोगे the only country, in fact one of the top most countries that performed well in inflation management is India. Yes. Right. उस समय आपको 6 के ऊपर होता है इन्फ्लेशन. अभी we have come to around 4.5-4.6 levels. राइट. इन कंट्री ये सप्लाई साइड इशू की वजह से नहीं था, ये आरबीआई के इंटरवेंशन की वजह से था. आरबीआई ने सप्लाई साइड की वजह से शूट अप हुआ, लेकिन हमको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर डिमांड को थोड़ा घाट दिया. हाँ, ठीक है. तभी हमको इन्फ्लेशन को कम करने के मौका मिलता है. तो यही मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है. राइट. तो 4% वाज द रेपो रेट. हम उसको बढ़ाकर 6.5 तक ले आया था क्योंकि इन्फ्लेशन कैन कम डाउन. नाउ इट इज कमिंग डाउन. So my estimate is by next year
as per various agencies and by RBI and by IMF and other things, by next year we should be close to 4, and 4 is our target. That's one point. तो हमारा इन्फ्लेशन मैनेजमेंट इज एक्सेप्शनल. उस पर उंगली उठाना मुझे तो मुझे कारण नहीं दिख रहा है. एक बात है. दूसरी बात क्या, आप रूपी के बारे में आप बात किया. रूपी के कारण जो वीकनेस आपको दिख रहा है, जो डिप्रिसिएशन हो रहा है, ये कारण क्या है कि हमारे इंडिया में वीकनेस है क्या? नहीं. इसका कारण क्या है? यूएस में नए राष्ट्रपति आए और उनको लगा कि जो टैरिफ्स वो लगाएंगे उसके वजह से थोड़ा अनसर्टिनिटी भी आएगा पूरा दुनिया में, ग्लोबल ट्रेड में. और इसी की वजह से वो जो इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा अनसर्टन है कि इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे पैन आउट हो जाएगा पूरा दुनिया में और इंडिया में भी. तो वो थोड़ा रिस्क ऑफ मूड में आ गया. रिस्क ऑफ मतलब वो रिस्क लेना नहीं चाहते. सो दे वेंट बैक. सो व्हेन दे आर मूविंग बैक टू यूएस, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देश में स्थिति खराब है. इसका मतलब अनिश्चित है, मतलब अनसर्टन सिचुएशन आ गया पूरा दुनिया में क्योंकि ट्रम्प नया प्रेसिडेंट हो गया यूएस का. तो आप समझते हैं ट्रम्प की नीतियां जो वो इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए, और इसी के ना मैं और एक बात बताता हूँ. और वहाँ इंटरेस्ट रेट्स भी दे आर नॉट उतना कम नहीं है, बिकॉज वहाँ भी हमको इन्फ्लेशन को देखने के मिला और इसी की वजह से वहाँ भी फेड इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया. तो इसलिए उनको लगा कि अभी हम सेफ साइड में रहेंगे और इसलिए हम मनी उधर पार्क करेंगे. जब उनको लगता है कि सिचुएशन नॉर्मल हो गया और भारत अच्छा रिटर्न्स प्रेजेंट करेंगे, तब नेचुरली वही एफआईएस फिर दोबारा हमारा शोर्स पे आएंगे और फिर इन्वेस्ट करेंगे. तो ये इंटरनल इश्यूज की वजह से नहीं है, एक काली ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से दे मूव टू यूएस. सो दे आर नॉट वरीड अबाउट इंडियन पोटेंशियल और इंडियन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस. तो रुपए के कारण आप ये समझते हैं कि ग्लोबली डॉलर बहुत मजबूत हो गया था, इसकी वजह से रुपया कमजोर होना शुरू हो गया. नॉट जस्ट इंडिया, इवन अदर करेंसीज आल्सो डिप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर. तो अगर ओनली इंडिया इज डिप्रिशिएटिंग एंड अदर करेंसीज आर नॉर्मल, तो इसका मतलब इंडिया में वीकनेस है. लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है. एवरी अदर कंट्री इज डिप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द डॉलर. तो ये ग्लोबल फिनोमेनन है, खाली इंडियन फिनोमेनन नहीं है. अच्छा, तो ये महंगाई के मोर्चे पे जो आप बोल रहे हो, इसमें तो आरबीआई बोल रहा है कि महंगाई बढ़ जाएगी, 4.5% हो जाएगी, और ये ट्रम्प की नीतियां कि महंगाई बढ़ने वाली ही होंगी. दुनिया भर में महंगाई फिर से बढ़ने का खतरा बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ वॉर हो सकता है. एग्जैक्टली. देखो, हम इंपोर्ट्स भी करते हैं. हमारे ट्रेड बास्केट आप देखोगे, हमारे एक्सपोर्ट्स भी है और इंपोर्ट्स भी है. और हम क्रूड ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं बाहर से. ठीक है. और अगर क्रूड प्राइस बढ़ गया तो नेचुरली वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के रूप में आपको यहाँ का वस्तु है, जो चीज़ें हैं वो महंगाई होगा. और साथ ही साथ जो हम बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सर्विसेज के लिए, अगर वो उन पर ज़्यादा टैरिफ मतलब इम्पोज किया तो नेचुरली यहाँ तो इन्फ्लेशन आएगा. तो वो कितना टैरिफ लगाएंगे, इसी टैरिफ्स को कंटिन्यू करेंगे, नोबडी हैज एन एस्टिमेट. पर वो बोल रहे हैं 1 फरवरी को लगाएंगे वो टैरिफ, कनाडा पे लगाएंगे, मेक्सिको पे लगाएंगे, चाइना पे लगाएंगे. तो एक्चुअली पहले वो क्या कहा, आते ही मैं लगाऊंगा. अभी तो पोस्टपोन किया. तो मे बी देखो, टैरिफ लगाना यूएस के लिए भी ठीक नहीं है, बिकॉज उनका सिचुएशन भी खराब हो जाएगा. तो देखो, मैं यूएस के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन नोबडी हैज़ ए क्लू अबाउट कितना टैरिफ लगाएंगे, उसका असर क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, जीडीपी में कितना असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन में कितना असर पड़ेगा, करेंसीज कैसे मूवमेंट होगा. नोबडी हैज़ एन एस्टिमेट. ओके, वी आर ऑल जस्ट स्पेक्युलेटिंग इन थिन एयर. इसका मतलब यू वी हैव टू वेट एंड वॉच until he comes with a statement or a declaration. तो देखते हैं ना, ये सारी चीजें एक बार बोलते हैं कि आरबीआई भी बोल चुका है कि हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, हमको नहीं लेना देना यूएस फेड क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प की जो पॉलिसीज होंगी उसके ऊपर पैनिक नजर बनाए हुए हैं. जरूर. अब बजट देखते हैं. ये तो हम बात करते हैं जीडीपी और इन्फ्लेशन हो गया, रुपया टूट गया, आम जनता को इससे आम जनता के लिए सब्जी के दाम बढ़ गए और अगर वो चीज़ खरीदते तो उसके दाम बहुत बढ़ गए. ये आंकड़ा बताता है 4.5%, 4.8%. लेकिन अगर आप ऐसे देखने जाओ तो कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और घर का बजट हिल गया है. वित्त मंत्री इसको एड्रेस करने के लिए क्या करेंगे बजट में? देखो, पहला है जो आपको इन्फ्लेशन जो आंकड़ा आपको मिल रहा है उसमें ज़्यादा इन्फ्लेशन आपको मिल रहा है फूड आइटम्स से. राइट. खाद्य पदार्थ की वजह से. यस, फूड आइटम्स की वजह से. लास्ट 2 ईयर्स, मतलब आज इस वित्त वर्ष को आप छोड़ दीजिए, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स हमको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिला है.
और उसका असर कहाँ पड़ेगा? फूड आइटम्स में, मोस्टली ऑन एग्रीकल्चर। तो जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो महंगाई आपको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका कारण हमारा इनएफिशिएंसी नहीं है, वो नेचुरल रीजंस है, वो एनवायरमेंटल रीजंस और वेदर रीजंस है। उसकी वजह से लास्ट ईयर वी हैड डेफिशिएंट रेनफॉल, इसके वजह से हमारा हार्वेस्ट हैज़ कम डाउन, तो नेचुरली द प्राइसेस विल गो अप। एंड व्हाई विल द प्राइसेस गो अप? बिकॉज हार्वेस्ट हैज़ कम डाउन और आवर इनकम लेवल्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। तो नेचुरली लो सप्लाई, हाई डिमांड, तो नेचुरली इन्फ्लेशन तो दिखेगा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इस साल तो हमको ज़्यादा रेनफॉल आ गया, तो इस बार हमारा आशा है कि वो प्राइसेस कूल ऑफ हो जाएगा, राइट? एक बात है। दूसरी बात क्या है, हम ज़्यादा पूरा पंचायत में एक बड़ा स्टोरेज प्रोग्राम हमने मतलब हमको देखने को मिला माननीय मिश्रा जी से, दैट वी आर कमिंग विथ ए लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्रोग्राम, राइट? उसकी वजह से द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज विल कम डाउन, the cost of produce will come down, then inflation will come down. So this is the reason why our inflation is going to come down by 4% or to 4% by FY26. तो आप बोल रहे हैं कि महंगाई के मोर्चे पे धीरे धीरे करके सुधार और हो सकता है, महंगाई घटने की संभावना ज़्यादा है। जी, और उतना ही नहीं है। एग्जांपल, हम ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं, हम पल्सेस भी इंपोर्ट करते हैं हमारे कंजम्पशन के लिए, उस पर भी हम बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है, हम उसको इधर जीरो किया या तो कम किया, ताकि हमारा यहाँ खर्च मतलब यहाँ का प्राइस ज़्यादा ना हो, इसका इन्फ्लेशन पर असर ना पड़े। इसके कारण से प्राइसेस कूल डाउन। दैट इज द रीजन we have already seen this financial year that the finance ministry, in fact the commerce ministry or finance ministry has come out with certain reduction customs duties on oils and pulses, so that the prices can cool down in the local market. सर, अभी तो मेरे पास ये लेटेस्ट अपडेट यही आया है कि संसद में ये जो सर्वे है ये पेश हो गया है, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या फाइन प्रिंट्स निकल के आते हैं। उसकी सबसे बड़ी कवरेज आप पुस्तक पे देखोगे। हम कुछ नंबर्स भी जो हैं वो स्क्रीन पर चलाते चले जा रहे हैं, जिसमें 4.9% से फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा, यानी कि जितना आपने कमाया सरकार ने बजट में और जितना खर्च किया उसके बीच का डिफरेंस, वो 4.9% ऑफ द जीडीपी रह सकता है। 16 लाख करोड़ वैल्यू टर्म्स में देखेंगे तो 16 लाख करोड़ रुपए है, और अगर परसेंटेज और जीडीपी देखेंगे तो 4.9% रहने का अनुमान था जो पिछले बजट में दिया गया था। लेकिन ये बात की गई थी कि 4.9% को घटाकर 4.5% कर देंगे। तो ये आंकड़ा आपके हिसाब से इस बार क्या आ सकता है बजट में? रोड मैप ऑलरेडी डिक्लेयर किया वित्त मंत्री इन 21-22, और उसी समय में ये कहा कि बाई फाइनेंशियल ईयर 25-26 वी आर एक्सपेक्टिंग वी विल गेट द फिस्कल डेफिसिट फ्रॉम 9.2% टू लोअर देन 4.5। 4.9 इस साल का, हाँ, इस साल का टारगेट है, और अगला साल का लेस देन 4.5। ये हमारा ऑलरेडी रोड मैप हमने डिक्लेयर किया 3 साल पहले। तो हम वी आर कमिंग डाउन एज पर द सेम रोड मैप। नाउ दिस ईयर इन टुमारोज बजट द एक्सपेक्टेशन इज दैट वी विल स्टिक टू दैट कंसोलिडेशन प्लान, एंड 4.5 के अंदर जो भी नंबर है, वट एवर इज कन्वीनियंट टू द बजट एंड वट एवर टू द गवर्नमेंट, आई एम श्योर 4.5 जरूर टारगेट करेंगे, या तो 1-2 पॉइंट्स नीचे भी हो सकता है, लेकिन 4.5 जरूर डिक्लेयर करेंगे एफडी फिस्कल डेफिसिट। अच्छा, आप थोड़ा उसको इंटरलिंक करके बताएं, जो हमारा कैपेक्स का जो टारगेट जो हम सेट करते हैं 11.11 लाख करोड़ रुपीस, वो कितना एस्टिमेटेड है इस बजट में? कितना वित्त मंत्री वो ऐलान कर सकते हैं? हमको बहुत क्लोजली हम उसमें मॉनिटर कर रहे हैं कि 11.11 लाख करोड़ रुपीस से कितना ज़्यादा इस बजट में क्षमता विस्तार पे खर्च होगा, कैपेक्स पे खर्च होगा। देखो, अभी आपको जैसे हमने शुरुआत में कहा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पेस है, इसके इस ईयर इलेक्शंस की वजह से थोड़ा पेस कम हो गया, लेकिन धीरे धीरे हम पिकअप कर रहे हैं। तो रिवाइज एस्टिमेट से कितना उसका क्या एस्टिमेट है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा एस्टिमेट है पूरी प्रयास होंगे भारत सरकार की तरफ से कि 11.11 लाख करोड़ खर्च हो इस पूरा साल में। अगर एग्जाम्पल 10.5 तक आ गया रिवाइज एस्टिमेट में, मुझे लगता है 11.5 से 12 के बीच में जरूर अगला साल के लिए एलोकेशन होगा। यानी आप बोल रहे हो 11.11 लाख करोड़ रुपीस एस्टिमेट दिया था कि इतना खर्च कर लेंगे जी, इलेक्शन ईयर था तो उतना खर्च हुआ नहीं जी। अगर 10.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ तो जो बचा कुछ अमाउंट है जो खर्च करना है वो इस
इस साल खर्च करेंगे तो ये जो 11.11 लाख करोड़ रुपए से सिर्फ 12 लाख करोड़ रुपए तक ही बढ़ सकता है, ये नहीं कि 13-14 लाख 15 लाख करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट कर दे सर। नहीं, देखो हम ये भी देखना है कि स्टेट कैपेसिटी कितना है, भारी अमाउंट है जो 12 लाख हम जब बात करते हैं, दैट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो राज्यों को दे दो पैसा, राज्य खर्च कर देंगे। राज्य के पास भी कैपेसिटी होनी चाहिए उतना खर्च करने के लिए, और सही जगह पे भी खर्च करना चाहिए। तो हमारा पास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है, खर्च करने के लिए वो कैपेसिटी भी है, लेकिन एक साल में 12 लाख करोड़ खर्च करना भी देखना भी चाहिए कि हो सकता है नहीं हो सकता है, तो वो भी देखना चाहिए। दूसरी क्या है, ज़्यादा अमाउंट इस पर अगर एलोकेट करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हम देखना चाहिए, तो वहाँ भी बहुत स्कीम्स चलाना चाहिए, स्टेट्स को ट्रांसफर भी करना चाहिए, इंटरेस्ट पेमेंट्स है, सरकार को चलाना भी एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है, ऐसे कई सारे एक्सपेंडिचर है। लेकिन सरकार पूरी प्रयास ऐसा करते हैं कि क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर बेटर हो, तो उसके लिए ज़्यादा फोकस क्वालिटी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़रूर होगा, लेकिन 2-3 लाख करोड़ तो ज़्यादा नहीं होगा। मतलब 11.5-12 लाख करोड़ रुपए के आसपास। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, देखना आप बजट में जब ये आंकड़ा आएगा ना कल, तो हम बीएससी के ऊपर तो बहुत ही हाईलाइट हो जाएगा ये 12 लाख करोड़ रुपए का आसपास। तो मेरा एस्टिमेट क्या है, अभी 3.4% ऑफ जीडीपी इज द एलोकेशन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरा एस्टिमेट क्या है, इसी लेवल को मेंटेन करते हैं सरकार आगे फाइनेंशियल ईयर के लिए भी। तो जो भी जीडीपी एस्टिमेट है, मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ 10% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है इससे नेक्स्ट ईयर। सो वॉट एवर इज द जीडीपी एस्टिमेट फॉर नेक्स्ट ईयर, उसका 3.4% जो भी आंकड़ा आएगा उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर पर एलोकेशन करेंगे, ऐसा मेरा आशा है। तो कितनी जीडीपी हमारी है? 325 लाख करोड़ रुपीस की सो जीडीपी। 3.324 लाख करोड़ हमारा जीडीपी एस्टिमेट है इस साल का। हाँ। तो उसका 10% आप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आप मतलब कैलकुलेट कीजिए। सो 3.5 के 350 के आसपास आएगा, और उससे 10% आप देख लीजिए, 3.4 देख लीजिए। सो मुझे लगता है अराउंड 11.5 to 12.2 लाख करोड़ इज दी कैपिटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये मेरा एस्टिमेट है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, 12 लाख करोड़ पे क्या कुल बजट कितने का होगा? पिछली बार था 48.21 लाख करोड़ रुपीस का बजट। सरकार जो खर्चा करना चाहती थी एक्सपेंडिचर साइड पे जी, रेवेन्यू साइड पे था 32 लाख करोड़ रुपए की प्राप्तियां जी, और एक्सपेंडिचर पे था 48.2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर। तो बजट हुआ हमारा 48.2 लाख करोड़ रुपए जो सरकार ने तय किया था। इस बार कितना बड़ा बजट आएगा देश का? अगेन इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट थिंग, टैक्स रेवेन्यूज कितना बढ़ेगा। एक टैक्स पॉइंट बोलते हैं कि फॉर एवरी 1% ग्रोथ इन जीडीपी व्हाट इज द ग्रोथ दैट वी कैन एक्सपेक्ट इन टैक्स रेवेन्यूज। तो टैक्स की बॉइंस की बेसिस पे और टैक्स रेवेन्यूज की बेसिस पे डिसाइड होगा अगला बजट कितना साइज होगा, राइट। और साथ ही साथ आरबीआई का डिविडेंड्स भी होता है, आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर और साथ ही साथ जो हमारा पीएसयूस जो भी है हमारा ओनरशिप है वहाँ से कितना डिविडेंड आएगा, राइट। तो इस सब पर निर्भर होगा कि अगला साल का बजट कितना होगा। और फिस्कल डेफिसिट मैंने जैसे कहा 4.5 तो जरूर टारगेट करेंगे, 4.3 4.5 भी हो सकता है, लेकिन वो सरकार निर्णय लेंगे एग्जैक्टली कितना लेंगे, कितना टारगेट पे आएंगे। सो इफ़ यू सी ऑल दिस थिंग्स, मेरा मतलब मोटा मोटा मेरा एस्टिमेशन है, मेरे प्रिसाइज एस्टिमेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 51 और 52 के बीच में हो सकता है। तो देश का बजट जिस बार आएगा 51 से 52 लाख करोड़ रुपीस का आ सकता है। जी, ये मेरा एस्टिमेट है, मैं वेरी क्रूड एस्टिमेट है, ये प्रिसाइज एस्टिमेट्स नहीं है क्योंकि मैं सरकार थोड़ी हूँ, तो नेचुरली मेरे पास ज़्यादा आंकड़ा नहीं होगा, लेकिन क्रूड एस्टिमेट के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ 51 को 52 के बीच में ज़रूर बजट का साइज होगा। तो सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि 52 लाख करोड़ रुपए का बजट आएगा, तो आम इंसान कितना खुश हो जाए। 52 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्चा करने जा रही है, बहुत अलग अलग जगहों पर खर्चा होता है, वो भी बताएंगे आपको। और कल सबसे बड़ी कवरेज आप पुस्तक पे देखोगे बजट की। अब किन किन जगहों पे सरकार खर्च करती है ये भी जानना जरूरी है, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि किन किन जगहों पे सरकार सबसे ज्यादा खर्चा करती है। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिस्तक की आप सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हो। इकोनॉमिक सर्वे पेश हो चुका है संसद में, थोड़ी देर में उसके फाइन प्रिंट्स आ जाएंगे और उसके ऊपर हमारी सबसे बड़ी कवरेज। और कल आएगा बजट, एक मैराथन रन है और बिस्तक पे आप सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं।
ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश है कि इस बजट, जो पिछला बजट था, उसमें क्या कुछ सरकार ने बोला था कि किस तरीके का एक्सपेंडिचर और कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा खर्चा होने जा रहा है, इसको हम बजट एस्टिमेट्स बोलते हैं। लेकिन उतना तो नहीं कर पाई सरकार पिछली बार खर्च बिकॉज ऑफ इलेक्शन ईयर। अब जो कल बजट आने वाला है उसमें नए आंकड़े लेकर आएगी सरकार। तो पहले तो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि जो बजट है वो 52 लाख करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है, यानी कि इस बार सरकार पूरा खर्चा जो है कुल मिलाकर करेगी अर्थव्यवस्था पर, वो लगभग 51 से 52 लाख करोड़ रुपीस का करेगी। संदीप वेम्पति जी हमारे साथ से मौजूद हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं खर्चा होगा कहाँ पर। तो सर, सबसे ज़्यादा एलोकेशन कहाँ पर सरकार, फोकस एरिया में क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ करेगी सरकार? देखो, हमको ये समझना है, जैसा कि आपने कहा इस बार 48.21 लाख करोड़ बजट का साइज है, और जैसे मैंने क्रूड एस्टिमेट जो आपको दिया था 51 लाख करोड़ और 52 लाख करोड़ के बीच में हो सकता है। एस्टिमेट क्रूड एस्टिमेट आ गया तो स्टॉक मार्केट बहुत खुश हो जाएगा 52 लाख करोड़ के बजट। देखो, तो हम टारगेट करना है ये एक्स्ट्रा 3-4 लाख करोड़ जो है वो कहाँ इन्वेस्ट करना है, यही फैसला लेना चाहिए, यही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द जो कंपोनेंट्स है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होनी चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होनी चाहिए, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है, स्टेट्स को ट्रांसफर करना चाहिए, सैलरीज दें, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में आपको सैलरीज भी आ जाएगी, सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर खर्चा करना है। देखो, तो ये 4 लाख करोड़ में जैसे मैंने अभी कहा 1 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको मतलब इंक्रीमेंटल आपको इंक्रीज दिखेगा। सो 11.1 मैंने कहा, तो 11.5 से 12 तक आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो 1 लाख करोड़ वहाँ एकोमोडेट किया हमने, तो बाकी हमको 2.5 to 3 लाख करोड़ हमको एकोमोडेट करना चाहिए। तो कुछ सम अमाउंट विल गो फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स जाएगा, यस, सम विल गो, ब्याज ले रखा है, मतलब जो आपने वो लोन ले रखा है उसका ब्याज देना है, उसके ब्याज देना है। हाँ। कुछ अमाउंट ट्रांसफर स्टेट्स को ट्रांसफर होगा, कुछ अमाउंट वी कैन इंक्रीज इट फॉर लेट्स से स्कीम्स लाइक व्हाट शुड आई से फॉर आवास योजना। इफ यू सी आवास योजना, government has already made a statement that 2030 तक we want to make sure that everybody has house, right? And उसके लिए already घोषणा किया। Maybe there can be higher expenditure on आवास योजना, both on rural side and ग्रामीण side है, क्योंकि आप देखोगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग निकाला उसमें ज़्यादा डेफिसिट है आवास में है। मोस्ट पीपल डू नॉट हैव पक्के घर नहीं है लोगों के पास। हाँ, बहुत कुछ है, लेकिन डेफिसिट जो भी कमी है वो ज़्यादा कमी है आवास में है। तो उसको कम करने के लिए सरकार पूरी प्रयास करता है। तो मेरे हिसाब से उसका एलोकेशन थोड़ा बढ़ेगा आवास योजना पे, और सोशल वेलफेयर स्कीम्स में भी आगे बढ़ेगा, मतलब ये करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट भी है 2030 तक हम बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना चाहिए एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दैट वी हैव वी आर सिग्नेटरी एज पर UN. So we have to reach a lot of goals by 2030. By 2030, so we have to do a lot of welfare programs also. तो ये जो 2.5 लाख जो मैं अभी बताया, तो कुछ अमाउंट वहाँ भी जाएगा। मैंने जैसा अभी कहा आवास योजना भी जाएगा, जल जीवन मिशन भी है, ऐसा कई सारे प्रोग्राम्स हैं, so that सरकार कैन रियलाइज objectives by 2030 as per the sustainable development goals of UN. लेकिन जो प्राथमिकता जो जैसे हम बजट स्पीच शुरू होती है तो वहाँ पर सबसे पहले रक्षा और रेलवे के ऊपर भी फोकस चले जाता है। तो पिछली बार जो रक्षा पे खर्च था वो 6.22 लाख करोड़ रुपीस, लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपीस का डिफेंस के ऊपर खर्चा करने की बात की गई थी, और रेलवे के ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए। तो ये एलोकेशन भी बढ़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको रेलवे का एक्सपेंडिचर आपको दिखने को मिलता है कि एंड that is capital expenditure only. I'm speaking about the capital part of the railways expenditure. Establishment expenditure अलग है of railways. So already मैंने कहा कि the expenditure is already increased in the capital expenditure side, will increase in the capital expenditure, and it will also go to for railways also. So railways also will see the increase in allocation, or roadways also will see the increase in allocation. Basic infrastructure, basically transport side, transport infrastructure will see the allocation. Defense also probably will see the allocation, because we need a very strong external security measures to kind of defend our borders. So wherever there is necessity, naturally the government will incur expenditure so that we are strong, we are empowered.
So defense maybe we can see some minor increase in the expenditure. पर डिफेंस में ना बात अब ये हो रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो दुनिया भर में जो ये तनाव युद्ध की स्थितियां थी ना उसको वो कंट्रोल करने के पक्ष में हैं। वो प्रो वॉर मतलब वो एंटी वॉर समझे जाते हैं। वो नहीं चाहते कि दुनिया भर में कुछ ऐसी जंग जैसी स्थिति हो, तो इसलिए वो आते ही उन्होंने ये इलेक्शन कैंपेन में बोला था कि ये युद्ध वगैरह को थोड़ा सा कूल ऑफ करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने खाड़ी देशों में होते देखा था, इजराइल हमास में होते देखा था। उसके बाद से हमने कुछ खबर देखी नहीं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से। तो इनफैक्ट हमने कुछ संधियों की खबरें सुनी हैं। रशिया के राष्ट्रपति ने भी बोल दिया था कि हाँ चलो पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे संधि, लेकिन उन्होंने बोला था कि हम तैयार हैं। अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारत पे इस समय डिफेंस पे सरकार का फोकस इस बार बहुत बहुत एग्रेसिव जाएगा या फिर थोड़ा हल्का पड़ सकती है सरकार? देखो ये बात एग्रेसिव की बात नहीं है या तो कूल ऑफ होने की बात नहीं है। देखो हम जब प्रिपरेशन करते हैं when we speak about डिफेंस, हम अगला साल के लिए या अगला 2 साल के लिए नहीं करेंगे, हम एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए हम करेंगे खर्चा। तो हम विकसित भारत भी बनाना चाहते हैं, उसमें डिफेंस भी आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंप अभी पीस बात कर रहे हैं तो इसकी वजह से हम डिफेंस पर ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे करके ऐसा कोई सोच नहीं है। हम खर्च इसलिए करते हैं कि हम विकसित भारत बनाने की खर्च करते हैं, उसमें डिफेंस भी आएगा। तो डिफेंस में मतलब 6.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा ही खर्चा होगा हो सकता है, इट कैन बी। आई मीन हम एग्जैक्टली कहाँ कमी है, कहाँ इम्प्रूवमेंट है, वी कैनॉट मेक एस्टिमेट, बट नेचुरली द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट विल बी ऑन डिफेंस, विल ऑलवेज मेक श्योर वी आर ऑलवेज ready to encounter any eventualities in the external side. It could be in any form. मुझे पता नहीं है, but we will surely be prepared and we will be prepared with this higher defense expenditure. Okay, और ये जो रेलवे so Trump is the president for the US for next 4 years. What about after 4 years? अगला 4 साल के बाद क्या होगा, हम nobody knows. So our preparedness is not for next 4 years or next 1 year, 2 years. Our preparedness is for next 10, 15 years, 20 years, 25 years. So we have to make this defense expenditure और लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक के लिए हम एक खर्चा करना चाहिए। तो फिर ये वाला तो आंकड़ा इस बार हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे। डिफेंस में बजट में इंक्रीज हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बढ़ सकता है डिफेंस के लिए। रेलवे तो हमको पता है, ये वंदे भारत जैसा बहुत ही बड़ा एग्जांपल हमारे सामने खड़ा हो गया। हम रेलवे स्टेशन को रीडेवलप कर रहे हैं, वंदे भारत को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ट्रैक्स को न्यू रेलवे ट्रैक्स को हम ले कर रहा है, हम रेलवे ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई कर रहा है, नया एरियाज पे हम रेलवेज बना रहे हैं। एग्जांपल जम्मू में हमने देखने को मिला कि वी हैव गॉट अ न्यू रेलवे लाइन, वी आर गेटिंग इनफैक्ट न्यू रेलवे लाइन देयर। सो वी आर एक्सपैंडिंग इन ऑल बेस, इनफैक्ट वी आर आल्सो स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन सेफ्टी ऑफ रेलवेज, राइट। तो देखो वी हैव नॉट सीन एज मच रेलवे एक्सीडेंट्स एज वी हैव सीन इन द डिकेड अर्लियर बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन railway safety, and this government has introduced something called Kavach. Yes. Right, due to which we are able to kind of give security to our railways and to the passengers. So government is always doing its expenditure so that we are prepared for long term, not for a year or 2 years or 3 years or probably next 5 years. और जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी तो रोड, हाईवेज, कंस्ट्रक्शन, ये जो पिछली बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई उतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्शन ईयर। तो क्या ये एकदम से जैसे ही सरकार इस बार बजट अनाउंस करेगी, आपको लगता है इस साल में बहुत स्पेंडिंग होने लग जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हाईवे प्रोजेक्ट्स के ऊपर? जरूर, और उतना ही नहीं, कैसे योगदान देगा अर्थव्यवस्था में? बिकॉज ये तो ऐसा हो गया ना कि आपने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप बोलोगे कि वर्कफोर्स की बहुत जरूरत पड़ती है, तो क्या वो रिकरिंग जॉब है? मतलब कि वो सस्टेनेबल आपको लगता है कि वो जॉब है, या फिर एक बार रोड कंस्ट्रक्शन हो गई या फिर हाईवे कंस्ट्रक्शन हो गई तो फिर एग्जाम्पल अगर आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो ज़्यादा वर्कर्स रिक्वायरमेंट होगा, एक बात है। दूसरी बात है एग्जाम्पल एक तरफ आपने रोड मतलब आपने ले किया, और उसका मतलब ये नहीं कि उसको एक बार बन गया तो उसके बाद फिर वर्कर की नहीं, दूसरा मौका तो मिलेगा ज़रूर, राइट। और हमको प्रोजेक्ट्स को कमी नहीं है, एक्सपेंडिचर को कमी नहीं है, नेचुरली उसी वर्कफोर्स को दूसरे जगह पे ले जाएंगे और वहाँ उनको कमाने का मौका मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये रोड खत्म हो गया तो इसका मतलब उसका कमाने के मौका का समाप्त होगा, ऐसा करके नहीं है। तो देयर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स टू गेट देयर इनकम अपॉर्चुनिटीज, ये बात है। दूसरी बात क्या है, सी एज आई सेड इन द बिगिनिंग में जैसे मैंने कहा, 1 रुपये आप
इफ़ यू स्पेंड इट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड, आपको 3 to 4 रुपीस आपको आउटपुट आपको मिलता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। वैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको मिलता नहीं है, इसीलिए द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर हैज टू बी ऑलवेज इंक्रीज व्हेन यू आर मेकिंग बजट एलोकेशंस। इसीलिए वी आर फोकसिंग मोर ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके राइट। एग्री के ऊपर मेरे को बात करनी थी, क्योंकि जैसे हमने वर्क फोर्स की बात की थी, लेबर की बात की थी, तो फिर बात तो यही है ना कि ये फिर उसके बाद कृषि को कैसे सपोर्ट करेगी सरकार, ये भी बहुत बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि रोजगार तो वहाँ पर बहुत है कृषि सेक्टर में हमारे। और उसके बाद पिछले बजट में भी सरकार ने बोला था कि नई नई वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा सरकार का फोकस था। इस बार देखते हैं वित्त मंत्री क्या कहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फाइन प्रिंट्स आए हैं और एक एक करके धीरे धीरे करके अब आपको ये पुस्तक पे दिखाई देने लग जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट फाइन प्रिंट्स जो इस बार इकोनॉमिक सर्वे के आए हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2025, जिसमें FY25 में GDP ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। एक रेंज दे दी गई है 6.3% से 6.8%। FY25 की GDP ग्रोथ में फिर से बता दूं, आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा है कि 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। RBI ये मान के चल रहा था कि GDP ग्रोथ 6.6% रहेगी। तो ये इस वक्त का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और उसके बाद जो जो चीज़ें आती चली जाएंगी वो आपके सामने होंगी। बीते 4 साल में सबसे कम रह सकती है ये ग्रोथ, और ग्रोथ में गिरावट के पीछे ग्लोबल कारण है और इसको एड्रेस ज़रूर किया जाएगा, मुझे लग रहा है कि इस बजट में। तो सरकार, वित्त मंत्री ने दे दिया इस बार का जो एस्टिमेट है FY25 का, दैट इज 6.3% to 6.8%। इस पर आपके कमेंट्स। जी, जैसे मैंने कहा 6.4 इज एस्टिमेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स from NSO, from NSO, yeah, NSO. 6.6 is the RBI's estimate. Yes. And 6.5 was the estimate from monthly economic reports from the finance ministry. But now we got the latest estimate, which is 6.3 to 6.8. Earlier it was 6.5 to 7%. जैसे मैंने कहा, एक कारण मैंने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा कारण जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अभी आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक मार्केट्स में जो SIPs फ्लो हो रहा है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी खुद पैसे लगा रहे हैं SIP की माध्यम से और खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो एक्चुअली ट्रेंड लाइन से ऊपर कर रहा है। ट्रेंड लाइन मतलब जो एक्चुअली हमको पहले कुछ ग्रोथ रेट हमको देखने को मिला, लेकिन पिछले 2 साल से उसका ग्रोथ रेट बहुत हो गया। सो जब हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली वो पैसा हम फिजिकल रूप में मतलब घर खरीदने के लिए, यानी कार खरीदने के लिए भी पॉइंट बोल लिया आपने। एग्जैक्टली मैं वो पॉइंट, शेयर मार्केट में लोगों का रुझान ज्यादा हो गया था, तो फिर वो पैसा जो है करना चाहते थे उसका एग्जैक्टली राइट, तो वो कंजम्पशन के रूप में खर्च कर सकते हैं। लेकिन लोगों को ये आशा है कि यार मैं इन्वेस्ट करूं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, आई वांट मोर रिटर्न्स, तो वो कंजम्पशन को पोस्टपोन कर रहा है। तो इसलिए वो गाड़ी खरीद नहीं रहे, घर नहीं ले रहे, बाहर नहीं जा रहे, रेस्टोरेंट्स पे नहीं खा रहे हैं, समझ रहे हैं, और वेकेशन पे भी नहीं जा रहे कुछ लोग। मेरे वजह से आई हैव सीन सम पीपल हु पोस्टपोन देयर वेकेशन प्लान्स बिकॉज दे हैव नो मनी, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन स्टॉक मार्केट्स। तो स्टॉक मार्केट इज एक्चुअली वन रीजन व्हाई वी आर आल्सो नॉट सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ कंजम्पशन इन इंडियन इकोनॉमी। सो ये भी हम समझना है। तो पैसा वही पैसा है, राइट। आपके पास अगर पैसा हो तो उसी पैसे के आप सोचते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ। If you like, you want to you'll invest in stock market. If you don't want invest in stock markets, you will invest in house. No, if you don't want house, you will buy a car. Or if you don't want to buy a car, you will invest in FDs. So the money has different ways to invest, or different ways to be floating in the economy. So most of the people in the Indian economy today are willing to get returns for their money, and they are postponing their consumption, or they are probably not even willing to consume, because they want more returns. And that is good news for India, right? And they are believing in an Indian growth story. मार्केट तो टूट गई लेकिन जितना टूटना है उतना नहीं टूट गया. Like if these people are not there and FIs, we are only relying on FI money, then market would have crashed even more. So our investors, in the sense our domestic people who are believing in Indian growth story, they are coming and investing in the stock market. Earlier, if FIs were not interested, markets used to crash 5-10%. Now they are not crashing as much because we are getting now support from the local investors. So this is a point that most people have to address. Most people have to take care in terms of where the money is going. Okay. और कुछ बारीकियाँ आ गई हैं, और उसमें यह है कि FY25 में जैसे आप बोल रहे थे कि महंगाई दर, वो ये बोल रहे हैं FY25 में महंगाई दर 4.2% और FY26 में 3.5% पे आने की उम्मीद।
3.5% तो आरबीआई के एस्टिमेट से भी नीचे चली जाएगी। सॉरी, आई मिस योर पॉइंट। FY26 में महंगाई दर जो है वो 3.5%। मैं एक बार बोलूंगा, क्रॉस चेक आई थिंक क्रॉस चेक करना चाहिए। ये वाला आंकड़ा थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लें कि FY26 में महंगाई दर जो है वो क्या कितनी रह सकती है। ये आंकड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लें, FY26 में महंगाई दर कितनी रह सकती है। और सरकार और निजी निवेश बढ़ाने पर जोर रहेगा। फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी का 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य है। ये तो खैर फिस्कल डेफिसिट का तो जो असल में मुद्दा यही है कि 3% पे होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट। ये 4.5% से नीचे लाने का है लक्ष्य। तो इस बार बजट में फिर तो अनाउंसमेंट आई, ये तो समझ के चले कि एक बार तो ये वित्त मंत्री जरूर बोलेंगे कि फिस्कल डेफिसिट को हम 4.5% से नीचे लेकर आएंगे। और कोई आंकड़ा जो आप सजेस्ट करो कितना आएगा, 4.3%, 4.2%, बाजार इस पर बहुत रिएक्ट करेगा। देखो, जैसे मैंने कहा 4.5 जरूर टारगेट करेंगे, लेकिन 4.5 से कितना नीचे वो टारगेट करेंगे, इट्स ए प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन वेरियस सिचुएशंस, वेरियस कॉन्टेक्स्ट एंड वेरियस ऑब्जेक्टिव्स दैट इट हैज टू फुलफिल। नाउ 4.5 के बाद हमारा क्या रोड मैप है, ये आपको ये आप समझना है। तो जैसा लास्ट बजट हमने देखने को मिला कि 4.5 के बाद हमारा टारगेट डेट टू जीडीपी को कम करना है। फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी कम करना की टारगेट नहीं है, डेट टू जीडीपी कम करने की हम कोशिश करते हैं। तो उसका रोड मैप मुझे लगता है प्लान इस बजट में अनाउंस करने के हमको मौका मिलता है। तो इस साल तो 4.5 जरूर, मतलब अगला बजट अगला साल के लिए 4.5 तो टारगेट करेंगे। 4.5 के बाद अगला साल के लिए और नेक्स्ट 5 ईयर्स और 4 ईयर्स वॉटेवर उसका रोड मैप क्या है, मुझे लगता है कल के बजट में हमको ये देखने को हमको मौका मिलता है। स्टॉक मार्केट बहुत तेज रिएक्ट कर रही है। आज के समय 265 पॉइंट चढ़ गया निफ्टी है, जो बहुत, अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो कितना परसेंटेज है? 1-1.5% होगा। 1-2% नॉट, इट्स माइनर वेरिएशन है। ये तो ज़्यादा एक क्रैश मानना ही मानना है। ये उम्मीद बहुत होगी कि सरकार, आप जैसे बात कर रहे थे कि कैपेक्स पे खर्चा होगा, चाहे थोड़ा सा ही सही। ऊपर से जो वित्त मंत्री बोल रही हैं कि यहाँ पर जो जीडीपी का उन्होंने बोल दिया है, एक रेंज दे दी है, महंगाई कम होने का उन्होंने बता दिया, और कैपेक्स पे ऐसा लग रहा है कि सरकार बहुत खर्चा देगी, इस बार करने को तैयार हो जाएगी। जो 12 लाख करोड़ भी होगा तो बाजार से खुश हो जाएगा। और अगर फिस्कल डेफिसिट 4.5% से कम हो गया तो मार्केट उसको बहुत कमजोर दे देगी। ऐसा जरूर करेंगे। तो हम जो खर्चा करते हैं मार्केट्स को टारगेट करने के लिए हम खर्चा नहीं करते हैं। हमारा दीर्घकालिक जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके लिए हम खर्चा करते हैं। देखिए, हम 2030 तक हम बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करना है। मैंने जैसे कहा 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना चाहिए, एक बात है। दूसरी बात क्या है, हम $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स को हम टारगेट कर रहे हैं, सर्विसेज एंड गुड्स एक्सपोर्ट्स। उसके लिए वी नीड लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर। So that is the reason I am saying we will naturally focus on infrastructure and capital expenditure. That's first thing. Second thing, by having this infrastructure expenditure, हमारा logistics cost कम होगा. If logistics cost come down, हमारा जो manufactured जो goods है वो globally competitive होगा. And if you are spending lot on capital expenditure, inflation भी नहीं होगा. If you spend more on revenue, it is inflationary. When you spend more on the capital expenditure side, it is less inflationary. In fact, not inflationary. In fact, अभी तो हम next year we want target, we want to reach by 4% or 4.2 something around. Okay, if expenditure is more on the revenue side, there is a possibility that it will be inflationary. So capital expenditure करने से आपको बहुत कुछ objectives achieve कर सकते हैं. So that is the reason I'm telling you that I'm sure, and in fact I'm most confident that the government will remain focused on capital expenditure and maintain 3.5% of GDP level even in the next budget. मैं कुछ और चीज़ें एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी। मैं एक ऐसा करते हैं, छोटे से ब्रेक ले रुक जाते हैं, तब तक मैं थोड़े और फाइन प्रिंट पढ़ लूँ और उसके सामने फिर उसके आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसको स्टॉक मार्केट से भी रिलेट करके देखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत खुश हो रहा है इकोनॉमिक सर्वे देखकर। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। यार अजय, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी।
यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह। LIC के एन्युटी प्लान्स देते एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स देते एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। Listen, there's a good insurance policy. A good insurance policy. Let's ask AI. A policy in which premium payment is limited but provides income for lifetime. LIC Jeevan Utsav. Wow. Lifetime celebration with LIC's Jeevan Utsav. Your future is set. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी। AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाओ। लाइफटाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। Listen, there's a good insurance A policy. good insurance policy. Let's ask AI. A policy in which premium payment is limited but provides income for lifetime. LIC Jeevan Utsav. A policy with whole life insurance cover also. LIC's Jeevan Utsav. Wow. Let's buy. LIC's Jeevan Utsav policy is our best choice. Even I was telling you the same. LIC's Jeevan Utsav. Lifetime celebration with LIC's Jeevan Utsav. Your future is set. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी। AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ। चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफटाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं जॉब क्यों छोड़ा। I wanted more out of life. बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। I wanted more out of life. बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
यार अजय, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। LIC के एन्युटी प्लान्स देते एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह। LIC के एन्युटी प्लान्स देते एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स देते एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इकोनॉमिक सर्वे पे सबसे बड़ी कवरेज आप तक पे देख रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले संसद पे इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है वित्त मंत्री ने, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे बहुत तगड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। 250 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक लगभग आधे फीसदी ऊपर, और सेंसेक्स भी 1% ऊपर आ गया है। बहुत तगड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे को तो थम्स अप मिला, लेकिन क्या बजट को भी थम्स अप देगा? बाजार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बीटन डाउन था। अब कुछ ऐसी चीज़ों पर आते हैं जिसका असर देखने को मिल रहा है। एक तो जो हम ये बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे में, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है वो FY26 GDP ग्रोथ 6.3 से 6.8% रहने का अनुमान बताया गया है। तो सर, हमने यहीं पर ही चर्चा छोड़ी थी, उसका इम्पैक्ट अभी तो स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल रहा है। ये आपके एस्टिमेट के मुताबिक है क्या? 6.3% to 6.8% फॉर FY26? जी, जैसे मैंने कहा, दो फैक्टर्स है इस बार कम ग्रोथ रेट मिलने के लिए, और मैंने जैसे कहा शुरुआत में, ये कोई स्लो डाउन नहीं है, कुछ ट्रांजिएंट फैक्टर्स की वजह से, और ये ट्रांजिएंट फैक्टर्स ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा अगला साल में। वो कह भी रहे हैं ग्लोबल चैलेंजेस की वजह से, इकोनॉमिक सर्वे में ये बात कही गई। जैसे बट मैंने दो रीजंस बताया आपको कि वन रीज़न है कैपिटल की वजह से थोड़ा हमको ग्रोथ रेट कम देखने को ये हो रहा है, लेकिन अगला साल तो हमने बजट कल हम पेश कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हम पूरा साल है हमारे पास पूरा खर्च करने के लिए है। तो मेरा आशा है कि जो भी एलोकेशन होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका पूरा खर्च होगा अगला साल में। एक बात है। दूसरी बात क्या है, कुछ ही दिन पहले हमको IMF और वर्ल्ड बैंक का आपको ग्रोथ रेट एस्टिमेट्स हमको मिला, रियल ग्रोथ रेट। मुझे लगता है IMF 6.5 और वर्ल्ड बैंक 6.7 एस्टिमेट किया अगला 2 साल के लिए, मतलब FY26 और FY27 के लिए। ठीक है, तो आपको जो ग्रोथ रेट आपको मिला सर्वे से 6.3 से 6.8 इज अलाइनिंग विद ग्लोबल एस्टिमेट्स आल्सो। वो बात है। दूसरी बात क्या है, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, जो स्लो डाउन नहीं है, तो IMF जो है वो 6.5 ग्रोथ रेट रिटेन किया। रिटेन मतलब क्या है, इसका पहले जो रिपोर्ट थे उसके पहले उसमें भी FY26 और FY27 के लिए 6.5 ग्रोथ रेट निकाला, लेकिन उसके बाद ही आपको सेकंड क्वार्टर का GDP डेटा मिला, और सेकंड क्वार्टर का GDP डेटा थोड़ा निराशा किया हमको। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी IMF जो ग्रोथ रेट अगला 2 साल के लिए जो ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया उसी को रिटेन किया। इसका मतलब क्या है, जो आपको कम ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है वो एक्चुअली वो स्लो डाउन नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं, अगर वो स्लो डाउन होता, नेचुरली नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में जो ग्रोथ रेट है IMF से और वर्ल्ड बैंक से, वो एक्चुअली कम होना था, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों रिटेन किया अगले 2 साल के लिए। इसका मतलब क्या है, इंडिया में कोई स्लो डाउन नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल वीकनेस नहीं है, कोई साइक्लिकल स्लो डाउन नहीं है। हमारा स्थिति बहुत अच्छा है। खाली एक्सटर्नल से कुछ फैक्टर्स है, एग्जाम्पल टैरिफ के एक कारण है, टैरिफ की वजह से कुछ असर हो सकता है, लेकिन nobody has a estimate of what is the impact of this। सरकार का स्पेशल फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा है पिछले 5 साल से। ये इस इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि इंटेंट सरकार का बहुत स्ट्रांग है कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर, और वो बोल रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे जो ट्रेंड रेट इंक्रीज द ट्रेंड रेट 38.8% बिटवीन FY20 से FY24।
तो FY20 से FY24 तक 38.8% की ग्रोथ कैपेक्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे सरकार ने दिखाई। लेकिन मैं जैसे कहा इतना बड़ा आंकड़ा इतना नहीं हो सकता, इतना जरूर नहीं हो सकता है। हाँ। तो मैंने जैसे कहा वो 3.5% जीडीपी जो लेवल है, हाँ। उसी लेवल को मेंटेन करेंगे, एक बात है। दूसरी बात क्या है, हमारा पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए। और तो जो 38% से ग्रो कर रहे थे CAGR से, उतना नहीं ग्रो करोगे। अब आप पिछली बार 11.11 लाख करोड़ थे तो 12 लाख करोड़ पे आ जाओगे। तो उसी लेवल पे अगर मेंटेन करना चाहिए, 3.5% लेवल पे अगर मेंटेन करना चाहिए, सो as much as the GDP grows, that much capital expenditure also will grow. Like if GDP grows by 10%, the nominal GDP, then capital expenditure also will grow by 10%, so that the 3.5% GDP level will be maintained. वो बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन पे बिल्कुल स्टैंड आउट रहा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, और कंस्ट्रक्शन में मिड FY21 तक मोमेंटम जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, नहीं मिड FY21 के बाद से मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, और मेरे ख्याल से 15% की अप्रॉक्सीमेटली ग्रोथ सालाना दिखाई है। प्री पैंडेमिक लेवल से लेकर यहाँ तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। तो यही सब सरकार गिनवा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाउसिंग की डिमांड ये बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है भारत में। जी, सो जैसे मैंने कहा, वन कैपिटल एक्सपेंडिचर है मल्टीप्लेयर ऑन इंडियन इकोनॉमी। दूसरा क्या है, रियल एस्टेट भी एक बड़ा कैपेक्स। दर्शक हमारे सोच रहे हो कि बार बार कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जी हमको कल बजट डिकोड करना है, और बजट डिकोड करने में जैसे ही वित्त मंत्री बोलना शुरू करेंगे ना, तो हम उसका कुछ ऐसी चीजें भापने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कल बजट आने वाला है वो किस थीम पे जाने की कोशिश करेंगे उस बजट में। तो साफ तौर पे सरकार की मंशा जो इस इकोनॉमिक सर्वे में बार बार हाईलाइट होकर निकल के आ रही है, वो कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग डिमांड, इसको लेकर बहुत ज्यादा फोकस किया गया इकोनॉमिक सर्वे पे। तो अंदाजा यही बाजार निकाल के चलता है कि हाँ, बजट इन सेक्टर्स के लिए कुछ पॉजिटिव जा सकता है। हाँ सर, अब आप। तो जैसा मैंने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर के जैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट्स है, वैसे रियल एस्टेट का भी मल्टीप्लायर इफेक्ट्स है। एग्जांपल आप बना रहे हो, नहीं वो प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ही दूसरे वाला। एवरी हाउस बेसिक्स इज सेम फॉर एवरी हाउस, राइट। एग्जांपल आप घर बना रहे हो, उसके लिए आपको स्टील चाहिए, उसको आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चाहिए, उसको सीमेंट चाहिए, उसको ब्रिक्स चाहिए, आपको पेंट्स चाहिए, आपको पाइप्स चाहिए। तो एक इंडस्ट्री के साथ जोड़ के बहुत सारी इंडस्ट्री फॉरवर्ड लिंकेज है, बैकवर्ड लिंकेज है। तो रियल एस्टेट पे फोकस करने से क्या होता है, देयर इज इफेक्ट ऑफ दिस ऑन वेरियस सेक्टर्स। सैनिटरी में भी आपको इफेक्ट आपको दिखेगा। एग्जाम्पल, लेट्स से द गवर्नमेंट इज फोकस्ड मोर ऑन गिविंग सम ट्रस्ट टू रियल एस्टेट। कल क्या होगा हमको पता नहीं, हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ एफर्ट्स और कुछ अनाउंसमेंट उसी दिशा पे ही होगा। तो व्हेन रियल एस्टेट इज फोकस्ड, बहुत कुछ जो रिलेटेड सेक्टर्स है उस पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील, ऐसे वाले जो सेक्टर्स, सैनिटरी, पाइप्स, ओके, राइट। और लेट्स से यू आर डिजाइनिंग, सो यू विल हैव द आर्किटेक्ट्स कमिंग इट। तो जो मशीनरी सरकार की चल रही है, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग जो चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो चल रही है, सरकार उससे कोई छेड़छाड़ करेगी नहीं, बल्कि और उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी जरूर। इसके लिए सकारात्मक पॉलिसीज जो है वो ड्राफ्ट हो सकती है सरकार में कल के बजट में। तो आप ये समझ के चले, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग, कैपेक्स, ये सबसे जुड़ी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स और घोषणाएं होंगी, हर बार बजट में होती हैं। उस थीम से सरकार डेविएट नहीं करेगी इस बजट में, वो होगा ही होगा, और उसका असर कैस्केडिंग देखने को मिलेगा अर्थव्यवस्था में। बहुत सारे सेक्टर्स एकदम से रडार पर आ जाएंगे। और उतना ही नहीं, हमको और बहुत कुछ सेक्टर से जहाँ सरकार फोकस कर सकता है। एग्जाम्पल, हम एमएसएमई सेक्टर देखना चाहिए। एमएसएमई क्या है, पूरा देश इकोनॉमी में उसका 30 to 35% उनका शेयर है इकोनॉमी में। एक्सपोर्ट्स में ऑलमोस्ट क्लोज टू 50%। नहीं, वो तो अभी बोल रहे हैं कि ट्रेड आउटलुक रिमेन्स क्लाउडेड नेक्स्ट ईयर, राइट। दिक्कतें रहेंगी, बहुत दिक्कत रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम फोकस नहीं करेंगे? नहीं, फोकस तो करेंगे, ये करना चाहिए, बिकॉज that is immediate what should I say, benefit that we can get from outside, because outside purchasing power है, उसको हम extract करना चाहिए through exports, right? When you are exporting, somebody is buying our goods or services, so there is purchasing power outside the India. We want to extract that into India, so naturally we have to focus on exports. We can't say that because the external environment बहुत क्लाउडेड है इसलिए हम फोकस नहीं करेंगे। जरूर करना चाहिए। तो इसके लिए एमएसएमई में इसकी दिशा पर भी कुछ पॉलिसी मेजर्स अनाउंस करने के लिए हमको देखने को मिलता है, बिकॉज देयर शेयर इन एक्सपोर्ट्स इज
as I said, very close to 50. आप बार बार एक्सपोर्ट्स बोल रहे हो ना, तो वहाँ लिखा हुआ यही आ रहा है बार बार इकोनॉमिक सर्वे में कि नियर टर्म ग्लोबल ग्रोथ टू बी लोअर दैन ट्रेंड लेवल। जितना ट्रेंड शो करता था उस हिसाब से ग्लोबली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं है, हो सकता है। एक्सपोर्ट्स प्रभावित होंगे, साफ तौर पे सरकार बोल रही है। लेकिन जब क्राइसिस है तभी हमको मौका है ग्रो करने के लिए। तो वी हैव टू टर्न द क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटीज, राइट? तो वी हैव टू क्रिएट an enabling environment so that we can sustain and withstand the global negative environment, or which is not good for trade. So as I said, MSMEs को focus करना चाहिए. We have to enable them so that they can produce more, export more. They can also be in a service sector. They can again do a lot of service exports. And the big corporations were anyways giving a lot of support in terms of PLI में तो हम 14 सेक्टर्स में हम 2 लाख करोड़ तक हम वी हैव सीन दैट वी कैन स्पेंड 2 लाख करोड़ अंटिल नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स 14 सेक्टर्स में। और बिकॉज ऑफ PLI इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मैन्युफैक्चरिंग हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग लॉट ऑफ मोबाइल फोन्स बिकॉज द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑन वेरियस सेक्टर्स थ्रू PLI. One of the sectors, mobiles and electronics, we are able to do a lot of manufacturing within the country for domestic consumption, and we are also exporting now. One of the major driver for this exports is Apple. पर वो आप जो बोलो कि एप्पल बनेगा भारत में और उसके बाद फिर, पर है तो वो ब्रांड दूसरी कंट्री का ही ना जी। तो अब मुद्दा ये है कि हम अपना ब्रांड ऐसा क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं बना रहे हैं तो जो ग्लोबल स्केल पे इन बड़ी कंपनियों को टक्कर दे सके। हम कहते हैं पीला स्कीम्स के ऊपर, लेकिन दे आर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, राइट? तो ये अपना खुद का ब्रांड, कोई ऐसी कंपनी जिसको 14 के पहले वी लिटरली हैड नो, और वी हैड वेरी फ्यू मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, राइट? बट अभी वी हैव सो मेनी यूनिट्स दैट वी आर नाउ एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज. Eventually I'm assuming and I'm expecting that the government will also focus on having our own brand or our own companies which can compete at the global scale. Now we are just building our capacities. यूपीआई का तो एग्जाम्पल सेट कर दिया भारत ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लोबली. अब ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी में भी लेकर आए ना, हार्डवेयर में. So that's what I'm saying. So 14 के पहले we had no focus on manufacturing. In 14 we got Make in India. We have just finished 10 years. Because of Make in India, we have seen a lot of focus of the government on manufacturing. Now we are becoming globally competitive. We are giving enabling environment for investors to come and invest and export from here. So now eventually we will build on these capacities. Now we are only assembling. Next we will also try to manufacture the components. The government will surely focus on that. Next we will try, I think the government will also focus on creating its own local brand, which is competitive globally and can export also globally. So government is always in the direction of progressive things. So you cannot overnight achieve or create a local brand which is globally competitive. So if you analyze the focus of the government, it is doing things incrementally. राइट. और वो जो एम्प्लॉयमेंट के मोर्चे पे बात है कि सरकार बोल रही है कि बहुत सारे कदम ऐसे उठाए जिसने एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया जी. और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को सरकार बढ़ावा दे रही है. वर्कर वेलफेयर प्रोग्राम्स बहुत सारे लॉन्च कर रखे हैं और रिसेंटली प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को भी लॉन्च किया गया है, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव कैटलिस्ट बनेगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए. जी. तो जैसे शुरुआत मैंने किया, तो ऑलरेडी इस बजट में मतलब 24-25 बजट में हमको ELI के अंडर वी हैव गॉट PM इंटर्नशिप स्कीम, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम. उसके अंदर PM इंटर्नशिप को आपको लॉन्च किया. तो जैसे मैंने कहा, इस साल पूरा बजट हमने लेट इंट्रोड्यूस किया, इसलिए हमको समय नहीं मिला उसको रोल आउट करने के लिए. लेकिन सरकार ज़रूर उसको रोल आउट करेंगे और उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है. एक बात है. दूसरी बात क्या है, जैसा हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है, when you give thrust to manufacturing, उसका आउटपुट क्या निकलेगा? एक तो गुड्स कॉम्पिटिटिव होगा, दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा. सो our policies are not only aimed at growth rate but also in terms of generating employment.
तभी देश आगे बढ़ता है। तो तीन चीज़ें तो मेरे को समझ में, एक तो आप ये बार बार जो हम बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कैपेक्स के ऊपर खर्चा, ये तो होना ही होना है पहली चीज़। उसके बाद फिर ये मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत बहुत कोशिश करेगी, क्योंकि जब अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा तो उससे आपके गुड्स जो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे इंटरनेशनली एक्सपोर्ट और लोकल कंजम्पशन के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक्सपोर्ट के लिए नहीं है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। लेकिन हमारा फोकस ओनली डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए नहीं है, इवन एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमारा फोकस होनी चाहिए। हाँ, और ये जो तीसरी चीज़ थी ये परफॉर्मेंस लिंक बोल रहा हूँ, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स नहीं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव नहीं, ये जो इंटर्नशिप स्कीम थी, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम, हाँ, ये कितना बड़ा आपको जो सरकार बोल रही है ट्रांसफॉर्मेटिव कैटलिस्ट हो सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि पिछले एक साल में वो जो स्कीम लॉन्च हुई थी, आप बोल रहे हो इतना पर्याप्त समय नहीं मिला, तो इस बार तो पूरा साल है चलो सरकार के पास, तो कोई बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती है इस इंटर्नशिप स्कीम को लेकर। तो रोल आउट तो नहीं हुआ, तो हम कमेंट क्या कर सकते हैं उस पर। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ वो पिछले बजट की बहुत हाईलाइटेड चीज़ थी कि टॉप 100 कंपनियों में जी इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो रोल आउट के बाद वो कैसे पैन आउट हो रहे तभी हम कुछ कह सकते हैं, तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन सरकार तो कमिटेड है, तो ज़रूर उसका रोल आउट के लिए पूरी प्रयास करेंगे, पूरी एफर्ट्स लगाएंगे और उसका जो भी आउटपुट निकालना है वो निकालेंगे। Economic Advisor Dr. Anuradha Guru. Today's press conference will go as follows. First, the Chief Economic Advisor will give a presentation on the key narratives from the Economic Survey 24-25, followed by question and answer session. Over to Chief Economic Advisor, Shri V. Anant Nageshwaran ji. Thank you and good afternoon, everybody. Although we are almost at the end of the first month of the current calendar year, there are still 11 more months to go. I wish you all a very happy and healthy 2025, and I hope you had a good first month already. So we will go into the presentation on what the Economic Survey 24-25 is about. This is a presentation on the Economic Survey contents rather than on the state of the economy per se, although which will be there at towards the end of the presentation as well. The structure of today's presentation, we will cover the following issues: the changing global landscape and how India can rise the game for the new playing field. And in that segment, we will cover 4 areas, as you can see here: reform through deregulation, augmenting internal capacities for growth, the private sector's role in nation building, the energy transition the Indian way, state of the economy regaining momentum, and the growth outlook for FY26. The changing global landscape, we did cover that in the last survey as well. 2024 was the year of elections across the world. And most of us know that both qualitatively and in terms of quantitative dimensions, the world that existed between 1980, and you can choose the end point, some people would say 2008 or 2012, 16, etc. Roughly about 3 decades was the peak
of globalization, hyper-globalization. As you can see in the statistics here, global exports went from 15% plus to 25%. Global FDI flows went from 0.5% of GDP to 3.75% of GDP. Global GDP itself rose 6 times in current prices. Extreme poverty came down because of faster growth in China and India. Internet penetration went from almost nothing to 23% as a share of world population. During this period, applied tariff rates across the world came down and the trade to GDP share went up. But clearly, you all know very well more than we do that this period has kind of ended. Even if we are not reversing very actively, we no longer are advancing along these dimensions. New import restrictions every year were of the order of about 3,000 restrictions imposed by countries across the world. They have jumped to about 5,000 restrictions in the last 4 years. And the key reason that is cited by countries in imposing restrictions is strategic competitiveness. I think that is the important theme that we have to internalize as a country, both in the policy space and in the private sector space. There is strategic competitiveness, so therefore efficiency considerations have given way to resilience and supply side security considerations. The value of trade covered under the new import restrictions was as low as $170 billion in 2014-15. Now it's more than $1 trillion, $1.3 trillion. So effectively, I think both import-export and investment flows are being looked at through the prism of strategic competition. And that is a new world which may be with us for quite some time to come, and therefore we need to get used to operating in this space. As a result, world FDI net inflows as a percentage of GDP has come down from around 5% in the first decade to around 1% of GDP. And world exports as a share of world GDP peaked, even though it may not have come down as much as investment flows have come down. Clearly, it is on a declining trend compared to the ascending trend we saw towards the end of the last millennium and in the first decade. One of the outcomes of the globalization era was also the rise of China as a manufacturing power. India also rose as a power in global services. So what has happened in the last 25-30 years, and it is continuing even now, is in several high-tech, medium-tech areas, the presence of China is pervasive and dominant, and the manufacturing as a share of world gross output, China's share will probably be higher than the combined share of the next 10 countries. It gives them a lot of strategic levers and advantage in several areas, as we will see later in some other dimensions as well. This is an important development along with globalization in the last 40 years. Now, along with the dominance in manufacturing, in terms of the materials and minerals required for global energy transition, let's first take a look at the solar energy. Global demand in 2010 was, China's share of the global demand was very small, and therefore China's production capacity in those areas was also quite small comparatively. But fast forward 11 years later, while demand has grown even within China, but the production capacity in that country has grown even more than demand, basically giving them an important lever in terms of the source of supply for all ingredients and components related to energy transition. And if you happen to see the September 2024 report of Mr. Mario Draghi on the European competitiveness, the entire 75-page report is full of European concerns about the concentration risk that is there with respect to one country as a source of supply for all critical components and technologies with respect to energy transition and manufacturing, etc. Moving on from solar,
energy to electric mobility, if you look at the key materials that go into it, copper, lithium, nickel, cobalt, graphite, and the rare earth materials, the dominance, and this is a slide which we have shown you back in July 2024 as well, the dominance of one country is quite clear. And in different stages of production, even if those materials are not mined in one country, the processing happens in a single country, and therefore, whether it is the cell components or battery cells, in fact, the truth is every single panel, solar panel we install, every single electric vehicle that we produce in this country, naturally the dependence on a single source for supply keeps increasing. So that dependence has to be kept in mind in the pace of transition towards renewable energies and also with respect to electric mobility. So this is the global context, that the era of globalization, faster and larger movement of trade and goods and services and investments is behind us. And there is a huge presence of a single country, a phenomena that we have not seen in a very long time, at least since World War II. So given this, naturally, we have to raise the game for a new playing field. The playing field has changed, and the game has to be rely on domestic drivers of growth. So what are those domestic drivers of growth? That is what is part 2 about. Just to recap, we do have a goal, a legitimate economic and social aspiration to become a developed country by 2047. The last economic survey broke it down into multiple components, generating about 80 lakh jobs per year, increasing our share of manufacturing in GDP, plugging Indian businesses into global value chains, and creating a viable small, medium enterprise sector, which in the German language is called the Mittelstand. Because countries that basically became powerhouses in manufacturing had succeeded in creating a viable small medium enterprise sector. Therefore, our goal with respect to manufacturing is inextricably tied to the success of being able to raise the share of SME enterprises as well. Therefore, what is the action? The action is we have to raise our game on domestic growth. And how do we do that? There are 4 dimensions to it. One is deregulation for growth, augmenting internal capacities for growth, the role of the private sector in nation building, and doing energy transition the Indian way. First, we start with the deregulation for growth. Now, when we talk of deregulation, it is not even big ticket deregulation or dismantling of the licensing era, which happened in 1991 and pursued by governments over the last 30 plus years. We are talking about the nuts and bolts or the plumbing of deregulation, which particularly affect enterprises, be they in services or be they in manufacturing, which affect them in terms of the time and the resource bandwidth that they have. And these are related to local level rules, laws, and regulations. So this is the deregulation exercise, which will probably not be a news story in the front pages, but that kind of deregulation at the local and the state government level have to happen pervasively for us not only to boost MSMEs, to boost manufacturing, but also to lift the potential GDP growth in the country. And this applies in the areas of labor and even in the education sector as well. We'll share with you a few examples. These are the areas where I think the regulations that are there today affect the day-to-day activities of businesses that don't have the kind of bandwidth which large enterprises have. Whether it is in land, building and construction, utilities, logistics, and there are sector-specific deregulation areas, and you can see more of them in Chapter 5 and also across other chapters in the economic survey. In general, we are obviously in the presentation, I can't go into all the issues which are there in the chapter. Just to illustrate, compliance costs make it cheaper to run 2 150 worker factory than 1 300 worker factory, whereas it should be the other way around.
Regulations also disproportionately affect small businesses. If you look at the building restrictions, the setbacks to be allowed on all the four sides of a building, the floor area ratio restrictions, parking regulations, etc., take away much of the land available at the ground floor level for businesses. So actually manufacturing can start only from the first floor onwards in many small enterprises, both in urban and rural India, if they fully comply with the letter and spirit of these regulations. Naturally, that raises the fixed cost of doing business, and naturally, it also disincentivizes more hiring. So deregulation is not just about ease of doing business, it is a pathway to employment generation. And naturally, we also know that many states impose a high markup on electricity costs supplied to businesses compared to other non-businesses. And whereas in countries like Vietnam and Bangladesh, particularly in Vietnam, which we look up to, it is the other way around. In terms of being our next important competitive country, they have the opposite problem, which is that the cost of electricity supplied to industries is on the lowest side there compared to what we have in India. And by the way, this is not just a theoretical exercise. We have done, and you will see more of it in chapter 7, we looked at those states which have progressed a lot on business reform action plan, and lo and behold, those states have a much higher level of industrial activity. So there is a positive correlation between BRAP and the level of industrial activity that is there in these states. Moving on from industry to employment-related areas where deregulation can be pursued, in general, we do specify the number of hours workers can work daily and weekly. Every country has it. But the problem is we have restrictions that this shall be adhered to week after week after week, whereas other countries give flexibility to the enterprises to be able to achieve this over a longer period, 3 months or 6 months. Your overall working hours cannot exceed this. But in a given week, there could be more or less work depending on demand surges. So that flexibility is missing. The same thing with respect to Factories Act on overtime working hours as well. The stipulated overtime hours are lower than competing nations, even though the overtime wages are higher in India on paper. The hours that people can be asked to work overtime is limited, and this is something that the workers and the management can negotiate between themselves depending on order flows and so on and so forth. Moving on to higher education in particular, where I think market forces can play a much better role in ensuring quality outcomes. The University Grants Commission specifies minimum credits for various course categories and in what sequence as well. These aspects could be entrusted to the institutions themselves. And the institutions must remain free to remain flexible with their coursework. This will allow them to adapt to changing market demands, and we should basically trust the faculty and students to find solutions to these problems. These are all areas where we don't have to micromanage, and that is something, this is just examples of deregulation we can undertake in industry, employment, and education. Moving on to part B of domestic drivers of growth, this is to continue to do the work we have been doing in the last 10 years on augmenting internal capacities for growth. And in July 2024, in agriculture, we devoted a lot of time in both Chapter 5 on the medium-term outlook on how agriculture can be freed in terms of empowering farmers to be able to produce the maximum value and raise productivity. And we deliberately call it the sector of the future because there is enough scope to raise the contribution of agriculture by 0.75% to 1% in terms of GDP growth by empowering farmers, as we wrote in last July survey. And there are examples which we have cited in this survey as well from different states, and also both in terms of land pooling and also in terms of irrigation potential, which we have done quite well in the last 8 years. The area under micro irrigation has gone up by 3 times, and that can actually be an important factor. So bringing more area under irrigation, land pooling,
and giving farmers the freedom to sell wherever, whenever, to whomsoever, at whatever prices, while undertaking different intervention mechanisms to take care of the demand side. That is the right combination that can unlock up to 1% of incremental growth from the agriculture sector. And given our size and given the impact climate change will have on some other nations in Africa and Asia, this will also give India a huge diplomatic and strategic leverage if we are able to become the breadbasket for many countries around the world. So this sector is not something that countries do well in their early stage of development, but given the change in globalization and given climate change, this sector can be a sector for the future as well. And as you see here on the left side, allied sectors in agriculture have been able to grow at much faster rate than the mainstream crops and food grains. So therein lies the clue as to what are all the elements from those areas which can be applied to traditional crop areas that will lift the overall growth rate of the agriculture sector. In terms of infrastructure development, we have done quite well in the last 10 years in particular, whether in terms of introducing new trains, new airports, we're contributing to reduced turnaround time in ports, coming down from 48 hours to 30 hours in the last couple of years, and capacity additions in the power sector, falling data cost, and expansion in telecom infrastructure. These are some of the illustrations we have picked up for highlighting here, but there are more details in chapter 6. We also, last time itself, we wrote about the turnaround logistics costs also have come down in the country, and turnaround time in toll booths, etc., and road transport are all contributing to higher production and distribution efficiency in the country. Particularly with respect to the urban India, cities declared open defecation free have gone from 15% to saturation coverage, and household latrines constructed, public toilets constructed, and waste processed as a percentage of waste generated. There is tangible and substantial progress in many of these dimensions. On the right side, what you see is that PM Awas Yojana urban and also Amrut in terms of water coverage, 70% tap water and 62% sewage coverage, and also the expansion of metro rail system. The reason we put it up here is that public transportation has to play a much bigger role in our energy transition and energy demand going forward, much more than in fact private mobility solutions, including e-mobility. Public transportation holds the key, and that is why not only we have 1,000 kilometers operational, we have equally another 1,000 kilometers that are underway. So this will, if we can integrate the public transportation network, our carbon emissions and also cleaner air and road congestion, all these dimensions will be addressed by utilizing public transportation infrastructure more efficiently. In terms of rural economy, the Swachh Bharat mission, 11.8 crore toilets in villages. Mission Amrit Sarovar. Again, if you look at the chapter on in agriculture and in industry, we talk about the importance of rejuvenating water bodies in contributing to the entire community development rather than purely providing water sufficiency. The National Health Mission, Sansad Adarsh Gram Yojana, empowering members of parliament to adopt villages and contributing to village development. Jal Jeevan Mission, 12.2 crore households provided, and Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen, 2.7 crore houses completed. Now, in terms of infrastructure, it is not enough to talk only about the physical infrastructure. We have done quite well with respect to at the general government level, not just the union government. The overall expenditure has gone up from 10.4 lakh crores across the country between center and states to 25.7 lakh crores on social services, primarily health, education, etc. And this is a growth rate of more than this is the multiple of about 2.5 times in the last 7 years. And in terms of the building blocks for better education, the foundational literacy and numeracy,
central and state government initiatives are covered. One is the Nipun Bharat initiative, the mission to ensure that every child attains foundational literacy and numeracy by the end of grade 3 by 2026. Some of the specific examples are also covered in the economic survey. Initiatives and interventions in states like Bihar and Gujarat are also given adequate coverage in Chapter 11 of the economic survey. Apart from that, we also highlighted several private sector not-for-profit initiatives in these dimensions, whether with respect to learning or social and emotional learning, which are not typically covered in classroom textbook learning. All the private sector initiatives or not-for-profit initiatives that can be replicated and scaled up, and specific state-level initiatives that are working well, which can also be considered as possible models to be adopted elsewhere. We have covered them in great detail in Chapter 11. The good news is that the proof of the pudding is there in the data. The latest annual State of Education report for 2024, which Pratham brought out a couple of days ago, the proportion of Standard 3 children in government schools who can read up to Standard 2 has gone up from 16.3% to 23.4%. And in middle school, major improvements in basic reading and arithmetic seen in all grades, and the progress at the high school level, more than 75% can do basic digital tasks. And the same report also covers the availability of infrastructure that facilitates learning in the classroom in terms of midday meal being served, drinking water availability, usable toilets, and usable toilets for girls in particular as well. In all these areas, in the last 6 years, there has been noticeable improvement as well. Skilling initiatives found a prominent place in the last budget presented in July. And many of these initiatives, in fact, it looks as if I have to give you a specific glossary for this slide alone, in terms of the number of abbreviations that are being used here. CTS stands for Craftsman Training Scheme in Industrial Training Institutes. PMKVY is Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, and Jan Shikshan Sansthan is JSS, and NSTI is the National Skill Training Institutes. NAPS stands for National Apprenticeship Promotion Scheme, and NCVET stands for National Council for Vocational Education Training. With this glossary out of the way, now we can look at the statistical landmarks and achievements that we have presented to you here in this slide. So in terms of Craftsman Training Scheme, 1.24 crore people have enrolled, and in the Kaushal Vikas Yojana, 1.57 crore people trained, etc. I will refrain from reading out all the statistics out here, but the important point is the industry partnership that is coming up in the apprenticeship promotion scheme and in the internship scheme as well. I think last economic survey spoke about the need for academic, industry and government partnership, and this is an example of that in the skilling space as well. Moving on from physical infrastructure, education and skilling to health, the affordable medicine and immunization program through the Jan Aushadhi Kendras, over 14,000 are operational. Full immunization coverage is happening. Disruptive technologies, including drone technologies, being deployed to provide medicines in remote areas. And also, if you look at the health identity cards, Ayushman Bharat Health IDs, 72.8 crore IDs have been created, and 26.4 crore vaccine doses monitored and administered, and E-Sanjeevani is serving more than 30 crore patients as well. I'll move on to the next slide. While physical health is clearly manifestly important, what goes beneath the surface in many cases is the importance of mental health, and the Government of India has been cognizant of the importance of maintaining mental health as well. Many initiatives have been taken. The National Mental Health Program, Tele Manas, which provides consultation over the phone, and there was a Mental Health Care Act leading to the setting up of 47 mental health institutes flowing from the National Mental Health Policy in 2014. And in terms of the
Mittelstand, which I spoke about as an important lever or important ingredient of manufacturing. In the PLI schemes for white goods, we have covered a box item on the success of the air conditioners with respect to the PLI. The entire value chain for air conditioners manufacturing in the country is now in place. And particularly with respect to white goods, 43% of the new applicants in the scheme are micro, small and medium enterprises. In terms of payment on time to micro businesses and small businesses, number of invoices financed on trades went up from 4.8 lakhs to 41.2 lakhs in FY24 in the last 4 years. That is a nearly 8 times jump in the number of invoices financed through trades. And the amount financed on trades has also gone up from 11,000 crores to 1.4 lakh crores. And many of you are aware of the section 43BH, which allows businesses to deduct payments only after they make the payment in the year in which they make the payment to micro, small and medium enterprises rather than on an accrual basis. And MSME cluster development program has improved productivity by 10 to 15%. And in this regard, the survey also covers many initiatives taken by different states, from Gujarat to Madhya Pradesh to Rajasthan to Tamil Nadu, etc. We cover initiatives taken by several states for the growing MSME businesses and attracting new businesses, which can serve as inspiration for other states as well. Harnessing the power of women entrepreneurs with respect to credit access, skill development, marketing support, and specific support for women-owned enterprises in terms of reserving public sector procurement for women-owned enterprises. So, basically the point is, in the first 2 sections of this, in domestic drivers, we have spoken about the importance of deregulation. We have spoken about the importance of continuing with various initiatives that we have looked at in the previous surveys in terms of boosting the productive potential. This is all from the policy space. From there, we move on to the role of the private sector, because naturally for a large economy, private sector plays a very big role. And in terms of the private sector, the specific asks are balanced deployment of capital and labor, curbing ultra-processed foods, fairer distribution of incomes, which is related to the balanced deployment of capital and labor, workplace importance to workplace safety, workplace culture and mental health, and thinking about supply and sourcing from a strategic perspective as well. Investment in R&D. So these are all the dimensions in which the private sector can also raise the game for the new playing field that we are confronted with today. In terms of fairer distribution of incomes, a topic which we brought up last survey as well, if you look at the growth in profitability and the growth in employment expenses, which is a combination of hiring and compensation, there is a huge disparity between the two, which has been highlighted by several private sector players themselves in the last few months. And this happened even as Indian corporate sector profitability hit a 15-year high in March 2024. And some of you may have heard that when in the 1960s, when Henry Ford raised the minimum wages for his car workers, he said, otherwise there will not be enough people to buy the cars the Ford Motors produces. So in some sense, raising wage and salary growth for workers is also a source for aggregate demand for businesses in the medium run as well. So it is both, it is enlightened self-interest rather than being seen only from a moral prism as well. And in terms of balanced deployment of capital and labor, the clear example is the use of artificial intelligence, and we have a special essay on this topic in chapter 13. In July 2024, we spoke about the energy demand management in a special essay on dealing with climate change. This time, the special essay is on the impact of artificial intelligence on employment generation and in general on labor. Deployment of artificial intelligence presents both opportunities and challenges. Past technology revolutions in general, sometimes we all feel that technology eventually generates more jobs than it displaces. That is true. But the key word is eventually. What happens between now and eventually is critical.
And that is where I think we need to create supporting institutions, enabling institutions to train them, to prepare them, and academic curriculums have to change, workplace practices have to change, etc. So therefore, technological transitions have not been painless in the past, particularly during the previous 3 industrial revolutions in the Western world, and we need to learn from them, and that is what this chapter covers. And the private sector therefore needs to weigh the benefits of artificial intelligence against the social cost, which may be subterranean in nature and which may surface over a longer period, eventually affecting the environment that is necessary for running businesses smoothly. And therefore, the chapter argues for a careful deployment optimized over a long horizon. This will augment labor and will deliver broad-based social benefits. Of course, one of the considerations, if I may say in a lighter vein, when we wrote this chapter was whether the chapter would become outdated by the time it goes to print, given the kind of fast changes happening in the artificial intelligence space. But the issue that I discussed here is not with respect to the technological developments per se, but also whether the potential and the threat the technology poses for augmenting labor or displacing labor. Those issues are discussed in chapter 13. And where else a private sector can contribute? Compared to several countries, when it comes to R&D spend, 50% of it happens from the government and only 41% happens from business enterprises. Even higher education, academic institutions only contribute 9% compared to other countries. I think this is one area where I think the private sector and people like Mr. Naushad Forbes, etc. have actually written about it. The funding of R&D in India is predominantly from government entities, and it is not for lack of incentives. Specifically, box item 7 in chapter 7 covers the various incentives that the government of India offers in comparison to peer countries, and they are definitely comparable. And R&D in India is primarily driven by business enterprises in many other economies, and whatever R&D happens in the private sector in India is not only low, but is also sectorally concentrated, and that is one area of improvement. Ultra processed foods. It is a 2.5 lakh crore business built on hyper palatability of food items. Misleading advertisements, celebrity endorsements, and missing and obscure labeling on packages targeting consumer behavior. Ultra-processed foods are directly associated with exposure to cancer, respiratory, cardiovascular, and gastrointestinal health outcomes. And poor dietary intake, unfortunately, is also associated with adverse mental health, and most UPF brands target children and adolescents. Therefore, we need to arrive at a quick resolution on the issue pertaining to front of the pack labeling, which has been happening in fits and starts in this country. And this is not just purely about consumer information and fair disclosure. It has got long-term implications for realizing our demographic dividend and productivity of our youth. Because we initiated the coverage of mental health in a big way in the last survey, and we continue that in this survey as well, and you can find more of it in chapter 11. 4 particular variables have a big implication for mental health. Those who rarely use smartphones, those who are close to their friends and relatives, and those who basically have social connect and physical activity and who consume healthy foods, they have a very high mental score. But if your consumption of ultra processed foods is frequent, and if your family closeness is not much, and nor do you have enough free time for yourself out in the open, and if you rarely exercise, then your mental well-being score is very low. It is not a theoretical construct, it is an empirical finding across the world, including in India. And lower mental health naturally has a direct correlation with the number of working days and overall productivity as well. So in general, workplace culture, private sector's attitude towards ultra-processed foods, prioritizing medium term over short term, all these considerations will eventually determine whether India's wanted demographic dividend actually materializes or not. And I think this is a very important issue, rather than apart from skilling and education, etc. This is not widely discussed, and we feel this is an important area where private sector can contribute a lot.
Energy transition the Indian way, which is the topic in the chapter on climate change and adaptation. A well-known French economist, Jean Pisani-Ferry, in the context of Europe, wrote that there is an impossible trinity of net zero. That is, policy cannot be at the same time fiscally sustainable and the economy is competitive without giving up on net zero ambitions. And that is what we call it, the impossible trinity of net zero. On the right side, between fiscal sustainability, net zero goals, and competitiveness of the economy at any given point in time, only two are possible. If you want to pursue net zero and be competitive also in the global economic space, then there has to be a lot of subsidization that has to happen. If you want to be fiscally sustainable, on the other hand, and also be economically competitive, Europe is realizing that net zero goals will become that much more challenging to pursue. Again, the Mario Draghi report on competitiveness has a lot to say on this with respect to Europe, and it applies to developing countries like ours as well. At the same time, if you want to pursue net zero, at the same time be fiscally prudent, then competitiveness will take a big hit as well, because energy costs will go up significantly, as has happened in Europe between pre-COVID and post-COVID. So the net result is that the trade-offs in climate mitigation is such that these days countries are realizing that we need to spend a lot of effort and resources on adaptation. The theme of the chapter on climate this time is how do we maximize our adaptation efforts, adaptation funding, as opposed to focusing on emission mitigation. India's energy transition, therefore, needs to have a multifaceted approach. It cannot be only about renewable energy, and renewable should be expanded to include transition fuels like natural gas and also, more importantly, nuclear power as well. And coal will continue to remain the mainstay, even as we are making far better progress than many other countries on nationally determined contributions. In fact, India's use of coal has not come in the way of India making much better progress on NDCs compared to Western nations. These considerations are discussed in great detail in the chapter on climate and also in chapter 5 as well. In terms of financing, much of the flows today are concentrated on emission mitigation, but critically important given the fact that the greenhouse gases already in the atmosphere will anyway cause global warming and damage to countries' environment. Countries need to generate more adaptation financing. In fact, Nobel laureate Thomas Schelling very clearly said, if per capita income growth in the next 40 years compares with the 40 years just before that, vulnerability to climate change should diminish and the resources available for adaptation should be greater. I say this not to minimize concern about climate change, but to anticipate whether developing countries should make sacrifices in their development to minimize the emission of gases that may change the climate to their disadvantage. Their best defense against climate change may be their own continued development. Basically, the point is, economic growth and development generates the resources to be able to deal with energy transition and climate change, and therefore, if we have to continue to grow while making energy transition, prioritization should be on adaptation. And apart from the strategic considerations I mentioned earlier in terms of ensuring that we are not affected by the single source concentration risk that many countries, including India, are exposed to. And as we wrote in the last economic survey in chapter 13, the power of collective action, small changes, big impact, has to be also kept in mind. The lifestyle for environment movement, small individual actions, impact of lifestyle changes. A 13% change in global population behavior can reduce carbon emissions. For example, having the thermostat at 26 degrees or 27 degrees and having a small fan circulation will keep the room cool than keeping the thermostat at 20 degrees in summer, for example. Food waste reduction. Finishing food on a plate can save 90 kilograms of food waste per person annually, cutting down carbon emission and food loss. Carpooling and public transportation, which I alluded to earlier, can cut down transport sector emissions. Carpooling can save 380 million liters of fuel daily in India by reducing nearly 8 lakh rides per day. And public transportation
in terms of integrated solutions is much better than focusing on tailpipe emissions through e-mobility, which also has a strategic angle to it. Recycling 1 ton of newspaper can prevent 25,000 liters of water wastage, contributing to more efficient resource use. Finally, we come to the state of the economy, which is the current. The economy grew 6% in the first half, and second half it is poised to do better. Growth remains close to decadal averages, especially if you look at agricultural sector, gross value added, industry. They all have grown better than the average over the entire period between FY15 and FY24 in FY25. Services sector is almost there, but overall the point is that the pandemic effects have completely now been erased from the trend growth estimates. And you can see that in the different components of expenditure-based GDP. Gross fixed capital formation has improved from 28.2% to more than 30%. And consumption share, private consumption share has gone up from 58.7% to 61.8%. And government expenditure has come down, in fact, from 10.8 to 10.3% compared to FY18. And export share also has gone up from 18.8 in FY18 to an estimated 21.5% in FY25. So basically, compared to the pre-pandemic shares of GDP, there is a good contribution or a better contribution coming from exports and gross fixed capital formation and private consumption as well. And this is what I mentioned in the previous slide. If you look at the overall GVA, on the top left, it has caught up with the trend growth, pre-pandemic trend. Agriculture has been above pre-pandemic trend, partly because of the growth in allied services, which I showed you earlier, which is high single-digit growth rates. And industry has now just popped its head above the pre-pandemic trend, bottom left. And with respect to the overall services sector, again, we have caught up with the pre-pandemic trend as well. Inflationary pressures have come down, barring a few items. If you look at the left side, you see the core inflation, core food, consumer food price index, overall core inflation, and the CPI inflation. Core inflation is below 4%, overall inflation is 5.2%, and the food price inflation index is close to about 8%. But if you remove specific items, then you can see that overall inflation trends are very subdued, and that is what the right side chart confirms for us. Headline inflation is 5%, but excluding tomatoes, onions, and potatoes is about 4%. Excluding pulse and vegetables is below 4% as well. In terms of export growth, while the headline numbers in merchandise exports may appear subdued, if you strip out petroleum and gems and jewelry, the growth is close to 10% between FY24 and FY25 in the first 8 months of the current financial year. And services sector in general have continued to grow in terms of the surpluses, and in the first half of the first 9 months of April to December 2023 and 2024, there has been a bigger surplus on the services trade as well. Naturally, all of this resulting in a balance of payments which is very comfortable. Around 1% of GDP is the current account deficit. And therefore, financing this current account deficit has been not a problem despite successful and profitable exits by many businesses in the last 2 years. Even as the gross inflows are improving, the repatriations on account of profitable exits or transfer of ownership from direct to portfolio investors hasn't posed a problem for the current account because of the subdued oil prices, strong private transfers, and good export performance in the services sector, contributing to a current account deficit which is just around 1% of GDP. The growth outlook for FY26, we projected 6.5% to 7% for FY25, and this time we are projecting a growth outlook between 6.3 and 6.8% for FY26, which is in line with the projections made by many international organizations as well. The risk factor, of course, again, not only because of the changes in the global playing field,
Global stock markets also have become lately volatile, as we witnessed earlier this week. And we have an interesting box item in chapter 2 looking at the correlation between S&P 500 and the Nifty indices. Whenever in the last 24 years, since the millennium began, whenever the S&P 500 corrected, what was the impact on Indian stocks and vice versa. So that is a factor that we need to keep in mind, because the massive growth in retail participation in the Indian stock market is definitely a good thing. But also, when the market corrects, it could have implications for spending intentions, and sentiment effect, etc. could be significant. And that is one risk we have kept in mind when we came up with the outlook between 6.3 and 6.8% for the real GDP growth. And as we always say, we will be very happy to be proven to be wrong and conservative if the final outcome turns out to be better than 6.8 as well. So, to sum up, how do we raise our game for playing field when globalization is no longer going to provide the tailwind in terms of export growth and foreign investment growth? We need to deregulate to make it easier for small and medium enterprises to grow. Deregulation is about removing the fear of growth in micro, medium, and small enterprises. And this is about the plumbing and the nuts and bolts of deregulation, which are primarily there in the state and local government space. We have to continue to augment internal capacities for growth. Particularly, agriculture sector has a potential to contribute up to 1% to GDP growth. Private sector can do its part in terms of lifting the spending on R&D, in terms of striking a better balance between capital and labor share in their businesses, in terms of marketing of ultra-processed foods, and taking mental health seriously as well. With respect to energy transition, considerations of financing, considerations of supply chain concentration risk, etc. means that we need to focus on public transportation and adaptation as an important strategy rather than emission mitigation, in relatively speaking. Business as usual across all sectors, academia, private sector, governments, etc., business as usual carries the risk of growth stagnation. Thank you very much. Thank you, sir, for the presentation. Now, floor is open for the questions. So, starting with 127. Please introduce yourself and your organization's name, and then Sir, would you like to speak anything? Sir, so you are going directly to the spot. Sir, now you people are going directly. We are going to. Okay.
incentivize labor augmentation in businesses, both in manufacturing, non-manufacturing, new jobs, adding to existing payrolls, etc., by defraying some of the contributions to EPFO, announcing the corporate internship scheme. So what the government can or should do was extensively mentioned, and even policy actions taken in the last budget of July 2024. And of course, the government can continue to take policy actions as it has been doing with respect to PLI schemes on labor-intensive sectors. And also in terms of the deregulation action, that is the government's, not just the union government, but the state governments and local governments' contribution to employment generation is by reducing the fixed cost of doing business so that firms can raise the variable cost by hiring more people. Beyond that, I think not everything needs a policy tweak or a policy intervention. Some of it is in the natural self-interest of businesses to be able to find this balance. And that is why I gave the example of Mr. Henry Ford. I'll just ask my colleague, Anuradha, do you have anything to add? No? Okay. Dr. Nageswaran Karishma, this side from Business Today. The previous economic survey had mentioned about the China Plus One strategy and how India could draw dual benefit out of it. But this one does not explicitly mention it. Does this indicate a change of stance of the government, or the strategy is still a part of it? Oh, there is nothing. This time we are speaking about the importance of importance to be given to domestic growth drivers, building domestic supply chain resilience, which is the same as what has been the thought process behind the Atmanirbhar Bharata, China Plus One, etc. So this is the continuation of the same theme. 122. सर मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज़ से। छोटे छोटे दो सवाल हैं। एक तो आपने सर्वे में कहा है कि फैक्ट्री एक्ट को अमेंड करना चाहिए ओवर टाइम लिमिट को बढ़ाने के लिए। अभी दो बड़े CEOs ने, एक ने 90 आवर पर वीक, एक ने 70 आवर पर वीक का सजेशन दिया है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सेकेंड थिंग कि जो ट्रंप के आने के बाद एक टैरिफ का जो कंसर्न है, ये कितना बड़ा कंसर्न आपने फैक्टर इन किया अपने ग्रोथ आउटलुक में? I don't want to go into the discussions that are currently happening in the private sector on the number of hours. So that is not something that we want to join. The point here is that small businesses do get seasonal surges in orders. And it will be good for them to have the flexibility to be able to achieve the weekly working hour limits over a longer period, which countries like Korea, Japan, etc. do that. So it is all about managing the seasonal surge in businesses. We are not going into the question of number of hours that Indians need to work, etc., which is a debate happening elsewhere. It is very difficult to give you a quantitative estimation with respect to the impact of trade policies that may be pursued by other countries, because right now it is hypothetical and speculative. But in general, what we have done is to take into consideration the uncertainties posed by the current global environment in terms of rising trade restrictions, rising investment restrictions, and therefore the growth number that we have spelt out does reflect these uncertainties, broadly speaking. 39. So Meghna Mittal from Money Control, you have emphasized on the risks that are there because of increasing dependence on a single country for energy transition, whether it's EVs or solar energy. I want to understand, are there any policy initiatives that India can still take to boost domestic manufacturing, or have we missed the bus? What are your thoughts? No. Actually, we have been taking those policies. That is why we have already built several elements of the solar energy supply chain in India. Capacities have increased, whether it is in panels or modules or cells, etc. But
At the same time, dependence also is there at a significant level. So it is not as if India has been passive and idle and simply depending on imports, whether it is in electric vehicle mobility or the battery cell components or in the components that go into solar panels, etc. Domestic capacity increase is happening. But given the state of demand and given the projections for demand growth, dependence also will continue to be there, and therefore we need to, this is something that one cannot give a mechanical or a formulaic answer, but it is about the consciousness with which we basically adopt multiple approaches to handling this supply chain dependence for the foreseeable future. And one of the answers we gave was, therefore, public transportation, giving an important role for nuclear power, transition fuels, etc. are all parts of the strategy. I'll ask my colleague Chandani if she has anything more to add as well. I think in addition to that, the government has also provided direct incentives for battery storage and also for electric vehicles manufacture. And on the issue of diversifying our sources of energy, there is a clear push by the government to diversify. So while we are doing renewable and non-fossil fuel, but there is a move, as was mentioned in the budget announcements last year, to also look at nuclear for small modular nuclear reactors. So there is a discussion and there is a push to become more and more energy secure for India's growth. Thank you. 26 from left side. Sir, Rishabh Bhatnagar with NDTV Profit. My question is, in the Eco Survey, you've recommended private investments in for small-scale farmers. What exactly does this entail? Is this privatizing parts of agriculture? And secondly, the Eco Survey also talks about, yes, page 249. And secondly, Eco Survey also talks about CBAM and EUDR as protectionist garbs. What exactly is India doing to sort of protest these on a diplomatic level? So in agriculture, there is, if you go back to the economic survey, you would see how much has been the credit flow to the farmers, how much of that has increased. And there was also a slide here which said that it's actually enhanced substantially. Also, there is a shift away from small, money lenders, the traditional means of financing their investments, towards institutional lending. And that has, in fact, from 90% that used to actually go to money lenders for their resources, it's down to less than 30%, which is much less than 30%, which is an indication that the institutional investing through, and the farmers are accessing that. In addition, for working capital requirement, the Kisan Credit Scheme card, the Kisan Credit Cards have worked very well to enhance that the availability of financial resources for them to manage their working capital requirements. In the long run, the private sector, as in the corporate private sector, will also need to invest, because that is where the resources for capital investments will that are required for agriculture will come in. On the issue of CBAM, so this is, CBAM is a border, it's a carbon border adjustment mechanism, as it's called, and it's a levy that would face countries that have emissions in their products, embodied emissions, greater than a certain factor. It is in a way, it's a non-trade tariff measure. It's a non-tariff barrier, and it does not take into account the fact that countries like India, we are at a different level of development, so there is clearly
and we see this as a means to a protectionist means to protect the European industry, and more than just the stated goal of reducing carbon emissions, because the end result, and there are discussions on that, and there is that it would only shift the carbon emissions from, at the moment they are consuming, because they are basically importing much of steel, let's say, but by this measure they protect their own domestic industry, and the emissions will happen within their countries. So how much is going to be really stopped in terms of carbon emissions? There are a number of studies, and an UNCTAD report brings out the fact that there's not going to be much gained through that. So clearly a measure to protect their own industry. Thank you. 11. Hello, sir. This is Surbhi from Business Today. Is it working? Yes. Sir, the survey has spoken about the rupee and how the dollar has gained strength over the last few years, and the rupee has still performed well, depreciating 2.9%. So do you see further depreciation of the rupee? Because a lot of analysts are speaking about, rupee touching 87 or 89, and how do you see it impacting the economy? Thank you. No, I think it's this foreign exchange management related question is better posed to the central bank, and unfortunately they're not here. I think the recent actions taken by the central bank, either with respect to the rupee or with respect to domestic liquidity, are the right steps in the right direction, and I don't want to add anything more than that. 46. Sir, Prakash Pedashu from ET now. Boosting domestic consumption is of course a key focus for the government at this point of time. Did economic survey make any specific recommendation to the government? So what is the question? The domestic consumption. I mean, boosting domestic consumption is of course a key focus for the government. So did the economic survey make any specific recommendation? I'm not sure. The economic survey. I'm not sure. I really. फिर से अपना क्वेश्चन दोहराइए प्लीज प्रकाश. Has the economic survey made any specific recommendation to boost domestic consumption? Yes. Is that the question? Yes. Okay. Well, the recommendation which is made not just to the union government but to governments around the country is actually a step to boosting employment, income generation, and therefore consumption. This is about deregulation, is exactly towards that. It is not a recommendation only to the union government. So by simplifying regulations and by looking into the nuts and bolts of regulations that affect small businesses, we are lowering the cost of doing business for them, therefore opening up the space for them to hire more, which will lead to income growth and therefore better consumption. That is the very precise recommendation that the economic survey is making to governments all around the country. 52. Good afternoon, Nikunj Johri from Reuters. So I have two questions. You've cited geopolitical risks to India's growth, and we've seen persistent tariff threats from the United States. So do you think India needs to have a preemptive policy perhaps, or we need to, our measures should be more reactive? And secondly, we've seen our net FDIs sharply coming down, although the gross FDI is increasing. There is a higher repatriation, as your presentation also stated. But the net FDI is sharply down. What do you think needs to be done to attract more FDI? The last year's survey suggested that India should open its door for Chinese investments. Lately, we've also seen de-escalation and direct resumption of direct flights. So do you think the time is right now to lift the investment restrictions that we have on China? So, Nikunj, with respect to your first question, the answer I gave to the gentleman from ET now is the same answer, which is that we don't want to talk about speculative scenarios of a single country's trade policies, etc. In general, I think
the steps that we need to take, and in fact, the economic survey, the chapter on external sector, has a box item on trade policies and the kind of industrial policies that have been adopted by countries in the past, and how we can adopt industrial policy without necessarily, without necessarily being protectionist about it. At the same time, it can also be an inducement for productivity. We have discussed all those things, and that is the way to approach it. So I think there is no point in being speculative, and whatever policies that may need to be taken in response to or in anticipation, that I'm sure ministries are looking at it. Now, with respect to boosting FDI, I think we have made our recommendations, few suggestions in the last economic survey. But again, FDI is something, as we showed in one of the earlier slides, FDI as a share of GDP has come down much faster than the export share of GDP globally. And we are no longer competing only with other emerging market nations. We are even competing with industrialized countries which want to friendshore or onshore their investments. And therefore, so one of the biggest magnets for FDI is actually the prospect of profitable returns, which is what India has been providing, whether it is portfolio investors or direct investors. And the last 2 years of continuous exits actually demonstrate that. And one way to ensure profitable exits is to ensure steady economic growth, and wherever possible, accelerating economic growth. Beyond that, whatever procedural requirements or opening up of sectors, we have done most of those things in several areas, more recently being in the last several years, being defense, space, drones, etc. So whether it is with respect to tariff policies or visa policies, etc., the government has been responding to the emerging situation, and therefore the FDI numbers should be looked at from the perspective of what is happening elsewhere in the world as well, in terms of overall FDI flows in general, which is what UNCTAD reports also point out, that there has been a decline because of various policy developments happening in every part of the world. 35. Hello, Sir. Ruchika from Business Standard. My question is with regard to your comments on AI. You've said that private companies should take into account social costs when deploying AI. And the survey also says that if companies do not optimize the introduction of AI over a long horizon and handle it with sensitivity, there's the demand for policy intervention and the demand on fiscal resources to compensate will be irresistible. So is there a case of taxing companies if they replace labor with AI? No, I'm not getting into specifics because we have not reached that point. It is a potential scenario that can develop if over time, and this is, by the way, a point made by the IMF in its discussion paper that came out roughly about a year ago, which is that if the social impacts of technological deployment results in such massive labor displacement, then in several countries, there will be a call for action on the part of the government authorities. But that is a hypothetical scenario which may develop if all considerations are not kept in mind, whether it is in terms of labor redeployment, labor reskilling, upskilling, etc. So this is, at the moment, there is no specific action that is contemplated, and that is not what is hinted at all in this special essay. 9. सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला कि क्या अभी भी आपको लगता है जिस तरीके से फूड इन्फ्लेशन है वो एक मेजर कंसर्न है? आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो फूड सब्सिडी है वो 0.5% से पिछले साल से बढ़ी है। दूसरा सर, क्रूड को लेकर आपका क्या आउटलुक है? क्या जो आपने 6.3 6.8 का जो ग्रोथ रेट लिया है उसमें क्रूड का आउटलुक क्या रहेगा? We have devoted a lot of space in the economic survey on food inflation. The point that we have made and we have been making over quite some time was that it's a concentrated impact of a couple of, or now let's say 3-4 items which lead to a very high food inflation. Food inflation is 8% now, and if we remove these 4-5 items, it becomes close to the target.
So why does that happen is quite commonplace knowledge. It happens because when there are climatic disruptions which are increasing, which we have shown in the chapter, there are crop losses, and naturally that leads to a seasonal spike in food inflation. So it's a question of management of the season. It's not a perennial annual concern. So we'll take last two questions. 121. Okay. No, we don't make any assumptions on the crude oil price outlook, and we don't project inflation. Our projection is for real GDP growth. I think if at all you want to interpret the number, we are not expecting at this point a major upside risk to the crude oil prices. And that is not something we explicitly model or forecast when we develop an estimate for real GDP growth. 10. Sorry. इनको दीजिए इधर 10 Siddharth from Informist. हाँ आपके बाद इनके बाद आप लीजिए. Just an extension to Tarun's question first. Last year the survey had said that monetary policy should not focus too much on food inflation. Now this survey has spoken a lot more about expanding production output to lower prices, to ease supply. Does that reflect a change in thinking of you or the finance ministry in terms of how monetary policy should look at food inflation? And second, the survey has called for a tripartite compact between the government, private sector, and academics in distributing the gains from AI. From what you've seen in US, Europe, East Asia, the role of the government has mostly been about giving billions of dollars of subsidies. Is that what the Indian government's role too is expected to be when it comes to setting up, let's say, fabs and just generally in the AI sector? Thanks. With respect to with respect to the role that monetary policy play on food inflation, etc., we have discussed it in the last survey. That issue was discussed and it is closed, and we are not making any observations on this at this point. Now, the comment about setting up fabs and etc., how does this relate to this question that you're talking about? I don't clearly understand the connection, inferences or the linkages you are making here. Yeah, right. Look, sure, I think all countries have to basically, there is no mechanical or formulaic way in which you can say that this is exactly the proportion by which you should mix technology and labor. It's an iterative process. We need both. You need to stay competitive, you need to provide gainful employment, and prepare the labor force to be productive as well, to be able to work with technology, etc. And in some cases where technology is useful in boosting productivity, it can also expand the business opportunities or the capacity, which can therefore, for example, if you're handling 10 queries today and if you're able to handle 1,000 queries with the help of technology, then the geographical coverage of your business can also expand, in which case you can absorb the labor by deploying them in more geographical areas. So the answers will therefore have to be found in specific situations. 10. The government's role is in skilling, in making sure that there is the set of, which is exactly what we talked about in terms of the deregulation. The government's role is to reduce wherever possible. Again, I mean the government as in the government as a system, not just the union government. It is the union, state governments, local governments, in being able to reduce the cost of doing business otherwise, such that when the fixed costs go down, that is the government's role in making it easier for businesses to be able to hire labor, to retain them, to remove the fear of growth in micro, small and medium enterprises. सर मैं राजीव हूँ दैनिक जागरण से. मेरे दो सवाल हैं सर. पहला सवाल है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में भी हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 6.4 रहने का अनुमान है, और 25-26 पे भी आपने 6.3 to 6.8% का अनुमान रखा है. तो क्या इससे हमारा जो विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 में वो प्रभावित होगा, बिकॉज ये 7% से कम का ग्रोथ रेट है. नंबर 2,
इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि चाइना पे जो हमारे सोलर एंड ईवी जैसे जो रिन्यूएबल एंड ईवी के लिए जो रॉ मटेरियल है, क्रिटिकल रॉ मटेरियल स्पेशली, उसके लिए हम चाइना पे सोलली डिपेंडेंट हैं और उससे बाहर निकलने की बात की गई है। तो क्या भारत को अमेरिका की तरह ईवी और सोलर रिन्यूएबल के प्रोग्राम को स्टॉप करना चाहिए या उसमें कटौती करनी चाहिए? बिकॉज हमारे पास रॉ मटेरियल है नहीं, और कहाँ अल्टरनेट है? So on the first question, if you look at a global real economic activity index, it's available publicly. You just have to search on the internet for global real economic activity index. It is maintained by the Federal Reserve Bank of Dallas. It has been declining since 2023 and it has now come to negative territory. It is their index of global real economic activity. So the growth rate, after having achieved 9.7, 7 and 8.2, the current relative slowdown in the economy is to be seen in that context. And India still remains the largest growing economy, fastest growing economy among large economies in the world. And you saw also in the slides that the global export share of GDP has been coming down, etc. So whenever we get the opportunistically, if we can generate higher export growth as we were able to do so in 21-22, we should be able to capitalize on that, and that is what is happening as well. If you look at the kind of articles that we have written in the last 1 year, we have written about how India has been able to diversify its product areas and also open new geographies for our export products. Those are all the ways to go, and whenever the global export growth picks up, in those years, export growth will contribute another 0.5 to 1%. Additional growth, which will take it to 7.5 or 8. And as we also mentioned in the presentation, agriculture sector itself can add 0.5 to 1% of additional GDP growth. So in general, these are all the ways in which we can lift this baseline number, and this baseline number reflects the current uncertainties and the fact that global real economic activity has slowed down in the last 1.5 years to 2 years. So that is the answer to your first question. Now, the dependence on a single country is, as I mentioned repeatedly in my presentation, figures in the discourse, in the policy discourse in Europe. It figures in the policy discourse in North America, etc. It is a global challenge, and that is why India became part of the, my colleague Chandani will supplement what I say. That is why we joined the Critical Minerals Partnership, and we ourselves are setting up, have set up policies on, as she explained in the previous question, on battery storage and some of the PLI schemes on the components for solar energy, etc. So we are taking policy steps already, and we are striking global alliances to make sure that our supply chain is diversified. But simultaneously, we have to keep an eye on what is the level of dependence and how critical it is, how constraining it is. So it is a multifaceted, multi-pronged action which we have already been taking. Chandani, you want to add something? Viksit Bharat growth rate in respect of the nominal GDP growth in dollar terms that is required is around 10%. And I think it is not something that is achieved on an average, on a year after year after year. There will be years when we will achieve more than that, and there will be years when we will achieve lower than that, depending on the global scenarios. So it is not something that is a mechanical number that is applied exactly identically year after year. Global conditions will influence it in some years positively, in some years negatively, and we have to be prepared to take advantage of it in those conducive years, while maintaining a certain minimum level of growth in those years when conditions are not favorable. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. In case they continue with replacing the dollar dominance. We have no comments on that. We already answered several questions regarding the potential trade action. I have nothing more to add to that. Photographically.